ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट। Done. Thank you so much. Done. Pakka. Thank you. Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Right, wonderful. Sorry for little delay because of some technical issue. Anyways, we started off. Come on, guys. So, friends, we were dealing with the topic of basics of income tax. In that, we discussed a lot of interesting points, but we still have some more concepts left in that first chapter, which we'll discuss today. We can't complete the first chapter today, but we'll talk some more interesting points in first topic. Are we ready, everyone? Yes. All of us? Yes, sir. Wonderful, my dear friends. Come on. Friends, as we discussed, how many sources are there for income tax law? 5 sources. What are the 5 sources? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. Come on, one more last time. Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act, Circulars and Notification, Judicial Pronouncements. Judicial Pronouncements का मतलब क्या है? Rulings of High Court and Supreme Court. Any ruling given by Supreme Court is applicable in whole of India. Ruling given by High Court only in that particular state. Barabar hai na beta? Everybody, sir? Yes. I'll ask you one question. Income Tax Act 1961 came into force on which date? Income Tax Act 1961 came into force on 1st April 1962. We discuss this point. Everybody, friends? Who gives circulars and notifications? CBDT. What is CBDT full form? Central Board of Direct Taxes. Correct? And circulars are clarificatory in nature. Notifications are for a purpose of notifying something which is there in the act. Barabar hai beta? Yes. Next question. Tell me answer for how do we read this 35(1)? Section 35 subsection 1. Barabar hai na beta? How do we read this 27? Section 2. Excellent. I already told you that if 2 points in a section are related, we call them as subsection. If they are not related, we'll call it as what? That is the reason why in definition sections you don't find subsections. What we find is clause. Barabar hai? Bola beta? How do we read this 56 to 10? Section 56, subsection 2, clause 10. And subsections will also have subclause. And what is the meaning of this word called proviso beta? Exception. Exception means simple language. Exception matlab kya hai? Simple language. Which is against the basic rule. Which is against the basic rule. Wonderful. Explanation? Clarification. Or something like a definition. Not every section will have subsection. Not every section will have clauses. It depends. Based on type of section, depth of section, it depends what all are covered in that section. Clear, my dear friends? What is 27, by the way? Assessee. 27 is what? Exactly. Next, my dear friends, does Income Tax Act apply to Jammu and Kashmir? Yes. If we do inside water, should we pay some tax? Yes. Exactly. If somebody says India means land, water, air, what do you call that answer as? Most nonsense, ridiculous, atrocious answer. Is India defined in the law? Yes. Which section defines India? 225A. Bolo beta, what is India? India covers territory, territorial waters, seabed, subsoil, underlying such water, continental shelf, and exclusive economic zone.
Airspace above territory and territorial waters. Territorial waters is up to how many nautical miles? 12 nautical miles. Basically, we discussed that once there is an India map. Example, adjust कर लो. बताया मैंने आपको कॉमर्स में क्यों आया मैंने. यही टैलेंट है अपना साइंस का. From here up to 12 nautical miles. What do we call it? And up to 200 nautical miles. What do you call it, beta? Exclusive economic zone. At an exclusive economic zone, exclusively only one activity is covered. What is that one activity which is covered? Extraction of mineral oil. That is the reason why they covered airspace above territory and territorial waters. That's all. There is a strong reason why they covered only that much. Barabar hai beta? Speak out. I have a next question to you. Which section defines person? 231. Beautiful beta. Are you a person? Are you an SSE? Is Shiva Teja a person? Am I an SSE? Now who is an SSE? अब ये मत बोलो SSE means SSE. नहीं. No extra talent. SSE means a person liable to pay tax and includes every person in respect of whom proceedings have been taken up for assessment of his income or income of any other person in respect of which he is assessable or loss sustained by him or such other person, refund due to him. Next, second, every person who is deemed to be an SSE. Last one, SSE in default. ये this person कौन है? हाँ छोटू, याद है ना बेटा? एग्जाम में जाके मत लिखना छोटू. एग्जाम में एग्जाम्पल लिखो. In case of a minor, income is clubbed in the hands of parent. But if minor earns income by his own skill, talent, then who is taxable? Minor is only taxable. अरे बोला ना बेटा मैं आपको ये चीज. बराबर है ना बेटा? So if minor gets some income, who is liable to pay tax? Parent. Which parent? Father or mother? जो अच्छा दिखेंगे वो. Whoever income is higher. लॉजिक है यार. कॉमन सेंस यूज करो. किसका इनकम ज्यादा है उधर टैक्स ज्यादा आएगा ना गवर्नमेंट को. Because we have a concept of what rates? Slab rates. And direct tax is what in nature? Progressive in nature. इसका मतलब क्या है? Higher the income, higher the tax. Lower the income, lower the tax. Indirect tax is what in nature? Regressive in nature. Tax remains same whatever kind of person you are. Correct ones? Next. What is the entry number for income tax? क्या बात है बेटा. Good. Entry number? Of which list? Entry number 82 of union list. Where is union list? 7th schedule. Where is 7th schedule? Article 246. Now shall we tell the full statement? Yes. From where from power has come to levy income tax? Entry number 82 of union list of the 7th schedule of Article 246 has given power to central government to levy income tax. If somebody asks you income tax who is levying, don't tell that wrong statement called मैडम के पास पावर है, निर्मला जी के पास पावर है, वो ले रहे हमारा पैसा, वो क्यों लेंगे यार? It's government who is taking. You're getting my point, everybody? And don't even write मोदी जी का हक है. क्या हक है? ऐसा थोड़ी होता है यार. Come on, what is the answer you will tell? Who gave power to levy income tax last time? Entry number 82 of union list of 7th schedule to Article 246. जब 7th schedule बोलेंगे ना, of article मत बोलो, to article, because 7th schedule is in Article 246. So it is 7th schedule to Article 246. फिर से बोलो. Entry number 82 of union list of 7th schedule to Article 246 of the Constitution has given power to central government to levy income tax. Tax मत बोलो, income tax. Logic क्या है? Because 82 deals with income tax, 54 deals with VAT. एक एक एंट्री नंबर एक एक टैक्स के बारे में बात करते हैं और बाकी टैक्सेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आई एम कंसर्न ओन विद इनकम टैक्स. वो बाद में देख लो आप. ठीक है ना बेटा? एवरीबॉडी माय डियर फ्रेंड्स, वन लास्ट टाइम प्लीज. एंट्री नंबर 82 ऑफ यू. स्पीक आउट गाइस, आर वी क्लियर? सो नो फीलिंग्स एंड ओनली सेक्शंस एंड दैट्स इट. बस उसी से काम होने वाला है. आर वी रेडी? डन बेटा, चलो आगे बढ़ते. सो गाइस, वन मोर लास्ट टाइम, टेल मी द आंसर फॉर दिस सेक्शंस.
27, 29. उससे पहले सेक्शन 4 क्या है बेटा? चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. क्या बोलते हैं ये सेक्शन? बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. Income earned by an assessee. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. One more time, please. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. Which section defines assessee? Section 27. हो गया ना वो? Income earned by an assessee during the previous year. Which section defines previous year? 234 and section 3. Previous year का meaning क्या है? Previous year is the year in which income is earned. Previous year is the year in which income is earned. Assessment year which section? 29. What is assessment year? Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. बोलो बेटा, what is assessment year? Assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax. Come on, what is section 4? Chargeability section. What does chargeability section say? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. Previous year which section? Section 234 and section 3. Friends, subject like law, your corporate law, you subject like tax, section numbers are mandatory. In something like accounts, types of cost, how do we interpret that cost? In the same way, in subject like tax and law, it is important to know section number. We cannot learn just like that. Clear, beta? This principle you keep in mind for all subjects, because every subject has got a different approach how to do it. Okay? Previous year defined by which section? 234 and section 3. Previous year is the year in which income is? Right. I will ask you one question. Think properly and tell me. Out of 234 and section 3, out of 234 and section 3 and 29, which one is always 12 months? 29 is always 12 months, because we know the point very clearly that assessment year is always 12 months. But previous year need not always be 12 months, because the business is started in middle of the year, that date till 31st March. Can we follow somebody called Diwali to Diwali? Jan to December, Valentine's Day to Valentine's Day, Vinod sir's birthday to Vinod sir's birthday? Not possible. Vinod sir also cannot do it. It should be from April to March. 1st April to 31st March. Clear hai beta sabko? Everybody guys? Good. Next, tell me my dear friends. We have also done a discussion about some interesting element where we spoke yesterday one important concept, that is section 14. Yaad hai beta? What is section 14? Heads of income. Bolo kya naam hai iska? Section 14 deals with heads of income. Accounting is different. Tax is different. I told you already. It is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing financial statements. Kush? Accounting is art, but tax is very much smart. Exactly. Now I told you very clearly that under income tax law, income is divided into 5 heads of income. The reason being very clear that for every head of income, there is a different computation mechanism. Computation, not calculation. Yeah. For every head of income, there is a different computation mechanism. How many heads of income are there? Bolo, 5 ke. Salaries, house property, PGBP. Fourth one, capital gains. Last one. Exactly. What are 5 heads of income once again? Salaries, house property, PGBP, capital gains, income from other sources. So friends, we are basically taking salaries, then income from, then capital gains, then income from. Bolo. When I combine all 5 heads of income, what do you call it? Excellent. We discussed that it is called gross total income. From gross total income, we take deduction under chapter. Exactly. Balance what we get is called, and this total income will apply section 288A. Kya hai 288A?
Rounding off of income. We'll round off the nearest multiple of 10, not 100, 10. Clear na beta? On this total income, we will calculate what? Tax. And yesterday we just discussed the basic tax rates for individual. Special points are there. We'll talk in detail today. Today we'll talk. Yesterday only I wanted to talk, but I did not discuss because of your DCOM exam. पर आज खत्म करेंगे उसको. Ready? Everybody sir? And जो tax आप calculate करेंगे उसको भी round off करेंगे. 288B. Rounding up the nearest multiple of 10 rupees. बराबर है? So what is 288A? Rounding off of total income. 288B. Rounding off of tax. Chalo. Last thing to ask, then I'll start today's discussion. 27. 29. 225A. India. 231. 234. Previous year. Section 3. Section 4. Chargeability section. Section 14. Heads of income. 288A. Rounding off of income. 288B. Rounding off of tax. Where from power has come to government to levy income tax? Entry number 82. Or the constitution has given power to central government to levy income tax. That should be the answer. Bang on. Good. Clear? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Can we proceed? Yes. Right. Now let's talk about some interesting discussion. Just listen, then we'll start writing. That is, what is the process of income tax? Listen very clearly, friends. Let's understand that properly. First step, we will do something called, we will determine residential status. We'll determine what, my dear friends? Residential status. Because in income tax, we have got individuals or companies or firms whom we classify into resident and non-resident. Resident is taxable in a different way. Non-resident is taxable in a different way. I'll ask you one logic. You please think properly and tell. Okay? For 1 minute, you listen carefully. Shiva Teja is in India. I'm born in India, brought up in India. One day, imagine, I went to US, done some activity in US, made some money in US. Indian government is telling, pay tax in India. Is it okay? Why not okay? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? वापस पूछूंगा दोस्तों, सुन लो ध्यान से. Shiva Teja is born in India, brought up in India, having Aadhaar card also in India. And I went to US, provided some service in US, made some money in US. India is telling, whatever income you want in US, pay tax in India. Is it okay? No? Okay, reverse question. Next question I ask. Answer mein bola nahi abhi tak. Next question. US is telling, you made money in US, no? Pay tax in US. Is it okay? अच्छा, मतलब पैसे जिधर कमाएंगे उधर टैक्स पे करेंगे. हाँ? आपका ओपिनियन वही है ना? Excellent. That is the general feeling and emotion. But income tax law says, boss will classify the person into resident and non-resident. If you are a resident, wherever you make money, I will tax you. If you are non-resident, I will tax you only if you make money in India. Now, how will a person become resident? How will a person become non-resident? We will talk in detail in second chapter. Second chapter name is residential status. We didn't start second chapter. I'm telling you the process of income tax. We are still in first chapter only. समझ में आ रहा है बेटा? यार बोलो दोस्तों. एक लॉजिक सा क्वेश्चन पूछूंगा सर, सोच के बोलना. You all know डेविड वार्नर? अरे इतना प्यार करता है इंडिया से, वो हर 15 दिन को एक बार रील बनाएगा. हाँ, एग्जैक्टली. Wonderful. Now tell me, you don't know David Warner? Oh my God. ठीक है. Cricket player. ठीक है. Which country? Australia. ठीक है. सब हाँ सच में बोल रहे फिर. This David Warner, my dear friends, Australian cricket player. I'll ask you a logical question. Think properly and tell me. Australian cricket player is coming to India. Let us say is coming to India, acting in one advertisement. He is acting in advertisement of, let us say, Kingfisher. Kingfisher advertisement is working. He is working in that ad. Okay? Now tell me, for that he is paid 25 lakhs. अरे मजाक थोड़ी है, David Warner है वो. 25 lakhs is paid. Tell me, is it taxable in India? Logic apply करके बोलो. Because भाई इंडिया में आया,
इंडिया में पैसे कमाए तो उसको टैक्स करेंगे ना भाई. नेक्स्ट सिचुएशन आई आस्क. डेविड वार्नर, who is not born in India, brought up in India. He is basically somewhere from foreign, some Australian citizen. Australian person went to Pakistan. To Pakistan छोड़ो. Australian person went to Sri Lanka. अरे हालत खराब है उधर. इधर भेजेंगे भाई. China. अरे नहीं यार. Let us say we will send him to North Korea. खत्म कलास. Let's say we will send him to New Zealand. New Zealand. Okay, listen. Australian cricket player went to New Zealand to play some cricket match in New Zealand and he made some money in New Zealand. ऑस्ट्रेलिया का बंदा न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड में पैसे कमाया. इंडिया इज कॉलिंग एंड टेलिंग इंडिया में टैक्स पे कर. ही विल टेल चप्पल लेके मारेंगे. अरे बराबर ना सर. You apply the logical common sense here. When Shiva Teja went to US, they are telling pay tax in India. थोड़ा हद तक समझ में आता है because I am born in India, brought up in India. Technically, I am a resident in India. Now, how will a person become resident? We will talk in detail separately. समझ में आ रहा है आपको? But a person like Australian guy who is going to New Zealand and making money, you bloody tell him that pay tax in India. Why they going to pay, boss? When he has come to India, made money in India, ask him to pay tax. He will pay. You understand, everybody? So resident है तो taxability बदल जाएगा. Non-resident है तो taxable बदल जाएगा. तो सबसे पहला काम compute income under 5 heads of income. What are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. बराबर है my dear friends? बोलो. Next. This is technically regarded as what beta? Gross total income. Number 3. Deductions under Chapter 6. Let me tell you one important point which I didn't tell you yesterday. That is, deduction under Chapter 6A are covered under 80C to 80U. Like that, so many sections are there. Something like life insurance premium pay karo, 80C के अंदर आएगा. Medical insurance pay karo, 80D के अंदर आएगा. Different cases, we have got different sections. Getting my point? Yes. These deductions under Chapter 6A are what, my dear friends? They are reduced from where? Gross total income. Then the balance is what beta? And this total income rounded off. 288? Barabar hai na beta? Friends, getting clarity, everybody? All of us. Next, what we will do is taxes computed. Taxes computed. Hold on. I'll write an interesting language now. Taxes computed. Next. From tax computed. From tax what beta? Computed TDS and advance tax is reduced. समझ में आ रहा ना बेटा? समझ में आ रहा ना बेटा? अरे टैक्स पेबल है लाख रुपए बट ऑलरेडी टीडीएस कट गया. लेट अस से फॉर एग्जांपल 1,50,000 तो 50,000 क्या आएगा? रिफंड आएगा. समझ में आ रहा है ना बेटा? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है बेटा? Tax deducted at source. So basically what I'm trying to tell you is that whenever there is a tax payable, from that we will reduce TDS what is done, advance tax what is done. मतलब उतना पैसा already कट गया ना boss? Sir, for example, when expert is making payment to Shiva Teja, they don't pay me full amount. They deduct 10% and pay me the balance. That 10% is called TDS. ये example दिया मैं आपको. अब ये मत बोलो कि हर केस में 10% ही है. अलग अलग केस में अलग अलग TDS रेट है. किस केस में क्या रेट है? We have a separate chapter called TDS. In short, let me tell you, for every point I wrote, there is one separate chapter. That is only a syllabus, actually speaking. Getting clarity, everybody? Next, 7th point. Balance is what beta? Tax payable or, and for that we'll apply 288B. That's it. What is 288B? Rounding off of tax. I think the process is clear for all of us.
Everybody, my dear friends. And one extra thing what I'll write is that when we compute income under 5 heads of income, when we are computing income under what beta? 5 heads of income. We also do something called clubbing of income. We also do something called what beta? Clubbing of income. Classic example, minor income is clubbed in the hands of parent, whose our income is higher. I already told you this example, no? Exactly. And we'll also, when I say compute income, we'll also do something called set off. Or carry forward of what beta? Losses. For example, in one business there is a loss, one business there is a profit. We will set off that loss with the profit. On balance profit only, we will calculate income tax. समझ में आ रहा है बेटा? Everybody, friends, now your syllabus for income tax at CA inter level. First chapter is basic concepts. Second chapter is residential status. Second chapter is what? Residential status. Third chapter is exemptions. There are some incomes which are totally exempt. Fourth chapter is heads of income. In heads of income, you have got salary, HP, PGBP, capital gains, other sources. All the topics you will learn. Then you have a chapter of clubbing of income. Then you have chapter of set off and carry forward of losses. Then you have chapter of advanced tax TDS. Then there's vast one chapter called filing of return of income. Student, आप लोग ITR, exactly. That is only your syllabus of income tax. I think we got a clarity. I'm sure we understood what is there in our syllabus first of all. Next coming days, what we are going to do, did you understand, my dear friends, everybody? All of us? Pakka clear? What is 288A? Rounding off of income. 288B? Rounding off of tax. Are we clear? Everyone? Yes, sir. So how do we determine income tax? Process of income tax, can you please tell? इसको छोड़ो यार, बोलो. Determine residential status. वो important काम है या नहीं है? Because वो बंदा रेजिडेंट है तो उसका टैक्सेबिलिटी बदल जाएगा. नॉन रेजिडेंट है तो टैक्सेबिलिटी अलग है. यार बोलना यार. फिर क्या करेंगे? इनकम कंप्यूट करेंगे. कैलकुलेट नहीं मेरे भाई, कंप्यूट. कितने हेड्स ऑफ इनकम है? हाँ निकालो. 5 हेड्स ऑफ इनकम है, कंप्यूट कर लो. उसके बाद डिडक्शंस निकालो. काफी डिडक्शंस चैप्टर 6A. उसमें बहुत सारे डिडक्शंस है. स्लोली वी लर्न ऑल द डिडक्शंस. डिडक्शंस माइनस करने के बाद बैलेंस को क्या बोलेंगे हम? टोटल इनकम. उसको राउंड ऑफ करेंगे विद सेक्शन 288A. फिर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे. टैक्स लायबिलिटी में से क्या माइनस करेंगे? टीडीएस और एडवांस टैक्स. उसके बाद जो बचेगा, कुछ पे करना है तो पे करेंगे, एक्स्ट्रा कट गया तो रिफंड ले लो. अरे यार इतना याद रखने का कुछ नहीं है, बस लॉजिकल सी बात है. सी फॉर एग्जांपल, let's say for example, if Karthik is there, his father is asking how much tax should I pay. First Karthik will ask one question, पापा आप रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? उसका जवाब वो देंगे. ठीक है? नेक्स्ट वीक के बाद वो जवाब आप देंगे. अरे पढ़ा नहीं यार अभी तक, रुक जाना है 4-5 दिन, आ जाएगा रेजिडेंट स्टेटस, फिर परफेक्ट हो जाएंगे उसमें. ठीक है? उसके बाद कार्तिक विल कार्तिक विल कंप्यूट इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम. देन व्हाट वी विल गेट? टोटल इनकम. उसके ऊपर क्या निकालेंगे? डिडक्शंस. देन व्हाट वी गेट? टोटल इनकम. उस पर क्या करेंगे? टैक्स कैलकुलेट करेंगे. बराबर है ना बेटा? लेस राउंड ऑफ, लेस क्या करेंगे? TDS and TCS. TDS advance tax. If the TDS advance tax is more, we will get refund. If it is less, we'll have to pay to the government. That's it. Getting clarity, everybody? बोलो बेटा, समझ में आ रहा है सबको? पक्का क्लियर है? So what is section 27, 225A, 231? Section 4. Very, very important chargeability section. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in. Exactly. Clear? Sure, take this. Yes, beta, bolo na. When I say calculate tax, that everything is covered. When I say compute tax, that is tax is computed. Thank you so much. When I say tax is computed, in that everything is covered, including health and education cess. सब कुछ covered है उसमें. रिड्यूस करने के बाद राउंड ऑफ. लास्ट जो गवर्नमेंट को पे करेंगे उसको राउंड ऑफ करेंगे. बराबर है यार? सर जो पे करेंगे गवर्नमेंट बोल रहा है भाई चिल्लर मत दे, राउंड ऑफ करके 10 रुपए दे.
Sujal, right? सर आपको वही से चाहिए क्या? ठीक है. पूरा अब नहीं हुआ तो आपको स्विंग करना पड़ेगा. एंजॉय. सर वो ब्लू कलर में जो लिखा वो इंपॉर्टेंट है बॉस. क्लबिंग, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड. एक्सक्यूज मी. या So पहले HEC ऐड करने के बाद एडवांस टैक्स. Yeah, obviously. When I say tax is computed, it is including everything. आप खुद सोचो, अगर आप TDS माइनस करके फिर HEC निकालेंगे तो HEC कम वैल्यू पे जाएगा ना, तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना. What is HEC you are asking? Oh my dear friend, health and education says 4% on the tax. Yesterday we wrote that, remember? So what is HEC full form? Health and education cess. They are calling cess because extra amount is collected for a special purpose. They call it as a cess. HEC beta. Health and education cess. ये क्या लिखा? HCC लिखा क्या? HCC क्या होता है मेरे भाई? Set off and carry forward of losses. Representative assessee, wonderful. It's as good as a deemed assessee. Agent of non-resident. Representative assessee is somebody, since we are not able to catch the assessee, we'll catch this representative assessee. But as a chartered accountants, we are never representative assessee. Income tax officer will never tell your client is not paying tax, you pay the tax. उठा के फेंक देंगे. सीन ही नहीं है. I mean, just for your knowledge, what I'll tell you is, practically we say that we are not representative assessee, we are assessee's representative. Means we will not take your liability. We will represent you, but we will not take your liability. आपके behalf पे बात करेंगे, but आपका liability हम नहीं उठाएंगे. Sir, clear है? हो गया बेटा? Can we proceed? चलो. Yesterday we started discussion about the tax rates for whom, my dear friends? Individual. What are three categories we discussed? Normal, senior. Normal age is up to 0 to senior. 60 to 79 super senior. 80 to हाँ भाई जब तक है. Simple. Are we clear with it?
Normal category, what are the slab rates? Up to 2.5 lakhs, nil. 2.5 to 5 lakh, 5%. 5 to 10, 20%. Above 10, 30%. Senior, up to 3 lakhs, nil. 3 to 5, 5%. 5 to 10, 20%. Above 10, 30%. Super senior, up to 5 lakhs, nil. 5 to 10, 20%. Above 10, 30%. बात करें कल इस बारे में? But yesterday we didn't have much time to solve the questions, but today we'll solve a lot of questions and become experts in that. Are we ready? But before that, I'll teach you one interesting point. Listen very, very clearly. That is, as I told you, my dear friends, there are three categories called normal, senior, super senior. बराबर है? This normal category, which category? Also covers. Normal category also covers HUF, AOP, BOI, AJP, and non-resident, irrespective of age. What is the meaning of this point? Let me explain it very clearly. Sir, Shiva Teja is a resident in India. Just to give you knowledge, after 3-4 days, I will teach you full detail, but I will tell one small line now. Any individual who is staying in India for 182 days or more, he is regarded as a resident. Oh, बहुत सारा रिएक्शन. हाँ, अरे कहाँ पे सुने सर? अच्छा ठीक है, बट टैक्स में थोड़ा सा डेप्थ है, थोड़ा अलग है. ये पॉइंट तो कॉमन है, बट नेक्स्ट पॉइंट अलग है. वो अलग वाला पॉइंट बाद में देखते हैं. इतना तो सुन लिया ना, ठीक है, अच्छी बात है. Somebody who stays in India for 182 days or more, we'll call him as resident. Now tell me, David Warner is an Australian citizen. He comes to India only for playing IPL. ये मत बोलो सर, इंस्टा में तो रोज रील्स बनाता है ना. अरे उसका क्या लेना देना यार. इंडिया में तो सिर्फ IPL खेलने के लिए आ रहा है ना सर. He stays in India for almost about 90 to 100 days. Is he resident? What do you call him? Non-resident. Details will go in second chapter. He's a non-resident. If Shiva Teja, okay, if let us say, okay, Shiva Teja, a resident, my age is 61 years. Example. Which category I will come? Senior. David Warner, 61 years. Which category will come? That is the clarity you have to get. मतलब एक बंदा अगर रेसिडेंट है 59 years तक नॉर्मल, 60 से 79 तक सीनियर. अरे यार, आप समझ रहे हैं आप लोग? अरे व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट इफ यू आर ए नॉन रेसिडेंट, अगर आप सीनियर बन भी गए, हम आपको नॉर्मल में लेके आएंगे. मतलब आपको कम एग्जम्पशन देंगे मेरे भाई, टैक्स ज्यादा लेंगे आपसे. और अपने को बोल रहे आप सीनियर बुड्ढे बन गए ना, आप बड़े लोग बन गए ना, बुजुर्ग लोग बन गए ना, आपको थोड़ा बेनिफिट देंगे. आप इतना भी ज्यादा बेनिफिट नहीं है, थोड़ा बहुत. समबड़ी बोल रहा है बहुत कम है ना सर. सर कभी कभी ना क्या होता है, जितना मिलता है उतना लेना चाहिए, ठीक है ना. अगर एक दिन कॉफी फ्री मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज फ्री मिलेगा. आप जाके आज नहीं बोल सकते उसको, भैया कल दिए ना, टेस्ट बहुत अच्छा था, मेरा दोस्त 4 लेके गया, 4 बार सिंगल बन गया, मुझे तो मिला ही नहीं, आज दे दो ना. कैसे मिलेगा? हो गया. जितना मिल रहा है उतना लेना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते यार. चलो, आर वी क्लियर? दिस पॉइंट अंडरस्टूड राइट? HUF क्या है? इट इज HUF. नहीं मेरे भाई, हुफ नहीं है वो, HUF है वो. नेक्स्ट AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस. BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. दोनों का क्लैरिटी पता है ना? इन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल. In AOP, individual, company, firm come together and do the business. AJP, artificial juridical person. Example, trust, universities, they'll all come under AJP. ICI, exactly, no doubt about it. Sir, clear everyone? Did I write local authority? Did I write partnership firm? So for companies and partnership firm, there is a separate tax rates, which we'll talk tomorrow, not today. Today our focus is only on individuals. Are we clear? ये तो पक्का है. अरे ये तो मतलब बहुत ही लॉजिकल पॉइंट हो गया. उसको बंदे को फॉरेन में जो कमाए उसको इंडिया में टैक्स पे करेंगे बोलते वो चुप थोड़ी बैठेगा यार. बराबर है ना? ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया थोड़ी है. ये कुछ भी बोलेंगे. समझ गए ना? ठीक है. So are we clear with this point? Everybody? Next, one more special point I will tell. Then we will write that 2 special points.
ठीक है, लिसन बेटा. सर लेट अस से देयर इज वन पर्सन मिस्टर रमेश, aged 44 years and income is 4,40,000. Which category? Normal. क्यों बेटा? एज 44. कैसे निकालेंगे इसका टैक्स बेटा, बताओ मुझे. अप टू 2.5 lakhs नहीं, 2.5 lakhs to 5 lakhs क्यों लिखना है मेरे भाई? 4.4 lakhs बराबर है ना? 5 lakhs क्यों लेंगे? एट व्हाट रेट? कितना है? 9,000. टोटल टैक्स कितना हुआ? अभी क्या करेंगे? एड HEC. अरे बोलो ना भाई, स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. कितने, क्या रेट है? 4%. कितना आया? 380. क्या हुआ? ठीक है. Now let me tell you one special point, my dear friends. That is, we have got one beautiful section known as 87A, which deals with the concept of rebate. Come on, what is the title of that? What do you call it, my dear friends? Rebate. This concept of rebate is only for resident individual. If you are a non-resident, this rebate concept will not apply. ये सिर्फ अपने वालों को देंगे, बाहर वाले को नहीं देंगे. Clear, my dear friends? You are resident individual whose total income. Did I write TI or GTI? TI में GTI में फर्क है ना बेटा? Before deductions we call it GTI. After deductions we call it TI. Whose total income does not exceed 5 lakh. Then law told we will give some rebate. Rebate is something like a benefit, a relief, discount. Accounting language discount. But in tax, don't use the word discount, use the word rebate. And the rebate is, they told, tax payable or 12,500, whichever is lower. मुझे बताओ बेटा, उसका टैक्स कितना है वैसे? 9,500. इसका टोटल इनकम कितना था बेटा? 440. मतलब 5 लाख के अंदर ही है. और क्वेश्चन में बोले क्या नॉन रेसिडेंट? अगर क्वेश्चन में नहीं बोले नॉन रेसिडेंट, हम यही अज्यूम करेंगे कि वो रेसिडेंट है. इट इज ऑलवेज प्रेज्यूम्ड इन द क्वेश्चन दैट इज रेसिडेंट अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्पेसिफाइज दैट ही इज नॉन रेसिडेंट. समझ में आ रहा है बेटा? रिबेट का लॉजिक अप्लाई होगा क्या यहां पे? बोलो बेटा. और याद रख लो बेटा, रिबेट शुड बी टेकन बिफोर HEC, नॉट आफ्टर HEC. मतलब HEC ऐड करके रिबेट नहीं लेना है बेटा. रिबेट लेने के बाद कुछ है तो देखते. अब मुझे बोलो, लेस रिबेट कौन सी सेक्शन बेटा? सर ये समझ गए ना आप लोग? मैं क्या लिख रहा हूं? U by S मतलब अंडर सेक्शन. दैट इज द लॉजिक व्हाट वी यूज ऑलवेज. ठीक है. अंडर 87 कितना रिबेट? 9,500. Because the rebate is tax payable or 12,500, whichever is lower. Balance net tax कितना है बेटा? That's it. And when that is zero, HEC कितना? Obviously. समझ में आ रहा क्या? इनडायरेक्टली मैं आपको एक बात बोलूं क्या? आप खुद लॉजिक मैथमेटिक्स अप्लाई करके बोलो. यू आर champions in maths and stats, I know that. So let me ask you one straight point. Tell one straight point, correct or not, you tell. Somebody, if his income is up to 5 lakh, his tax will be 0. बराबर है? क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स जो बनेगा वो तो 12,500 बनेगा ना बेटा. When it is 12,500, automatically rebate is 12,500, tax becomes 0. मतलब जिसका इनकम 5 लाख तक है मेरे भाई, उसका टैक्स होगा 0. अगर उसका इनकम 5,01,000 है, रिबेट नहीं आएगा, टैक्स लगेगा. अरे ये सर नो माय डियर फ्रेंड्स, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं. मतलब आप ये समझो, व्हाई आई टोल्ड लाइक दैट, बिकॉज 5 लाख टैक्स इज 0. इफ इट इज 5,01,000, रिबेट तो आएगा नहीं. मतलब 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख 12,500, 1,000 रुपए पे 20% 200 रुपए, मतलब 12,500 प्लस 200 12,700. उसके ऊपर सेस आएगा 13,500. कमा एक्स्ट्रा कितना? 1,000 रुपए. अरे मैक्स समझ गए ना आप लोग? चाहिए तो कैलकुलेटर में चेक कर लो, यही आएगा आंसर. अरे बोलना बेटा, स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. एक्सीलेंट.
I hope we got a clarity of thought on this concept called rebate. But you have to keep in mind all the 3 points. Rebate concept is only for resident individual whose total income आपसे पूछता है कि भाई मेरा इनकम 6 लाख तक है, टैक्स कितना आएगा? अगर आप उसको बोलेंगे अरे भाई 5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है, 1 लाख पे टैक्स लगेगा, दैट इज ए नॉनसेंस आंसर. 5 लाख तक टैक्स नहीं है ऐसा कुछ है क्या लिखा एक्ट में? 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है मेरे भाई. किसने बोला 5 लाख तक टैक्स नहीं है? जिसका इनकम अगर 5 लाख के अंदर ही है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? रिबेट की वजह से नहीं लगेगा. पर अब ये मत बोलो कि टैक्स जीरो है भाई. You're getting my language, what I'm talking, no friends? See, never ever tell a statement up to 5 lakh tax is zero. That is wrong. Up to 2.5 lakhs only tax is zero. But if somebody whose income is up to 5 lakh only, tax will become zero because of rebate. Limit बढ़ा नहीं है, limit तो 2.5 लाख ही है. Limit is 2.5 lakh only, but because of rebate, tax became zero. दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना बेटा. ये एग्जाम में बहुत बार आता है एग्जाम में, और स्टूडेंट्स अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं. लिखते हैं टैक्स पेबल 9,500, रिबेट 12,500, 3,000 रिफंड. बेटे अपने बाप का नौकर, देने को रिफंड कुछ भी यार. सीधा 12,500 लेंगे क्या यार? कितना है रिबेट? Tax payable or 12,500, whichever is lower individual, irrespective of age, and a non-resident individual, irrespective of age. Clear ना बेटा? Sir, I have a reason why we wrote that word non-resident individual, because company में भी resident non-resident हो सकता है. आप ये मत बोलो नॉन रेजिडेंट मतलब रिबेट नहीं आएगा, या ये एप्लीकेबल होगा. कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट बिल्कुल अलग है, जो हम कल पढ़ेंगे. आज फोकस इज ओनली ऑन एग्जैक्टली सेकंड स्पेशल पॉइंट. इन केस ऑफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, in case of a resident individual, underline that word resident. In case of a resident individual whose total income, in case of a resident individual whose total income does not exceed, in case of a resident individual whose total income does not exceed 5 lakh. बराबर ना? Whose total income does not exceed 5 lakh. Come on. Rebate is allowed. Continue. Come on. Rebate is allowed under section. कौन section है बेटा? 87A. Full stop. Full stop and continue. Full stop and continue. Rebate is tax payable or 12,500. Rebate is tax payable or 12,500, whichever is lower. Rebate is tax payable or 12,500, whichever is lower. That's it. Are we clear? Just take that example, please. Only the example. Concept don't write again. Already it's over. तो यहाँ पे जो इनकम लिखा है that is after deduction. Yeah. Whenever I write income, that means after deduction. See, whenever I want to write before deduction, I'll always write GTI. I'll be very careful in writing that. And in question also, they'll specifically tell. In question, whenever they just use the word income after deductions. I mean, since we are in the first chapter, we are writing like that. But the way we progress next month, 30 days, 35 days, that time we'll start solving problems where there are deductions also. And now also we'll solve small chotu questions related to deductions. Depth will come later.
हो गया? डन, ब्रिलियंट बेटा. बोलो, व्हाट इज सेक्शन 87 ए? Rebate only for resident individuals whose total income does not exceed. How much is rebate beta? Tax payable or 12,500, whichever is lower. Indirectly ये हो रहा है कि जिसका इनकम 5 लाख के अंदर है उसको टैक्स 0 हो जाएगा. वो इनडायरेक्ट मीनिंग है, बट आप डायरेक्टली बोलो मत वो स्टेटमेंट. सर क्लियर है ना? चलो आई विल गिव 5 क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व. ठीक है? फर्स्ट वन, मिस्टर एक्स, Mr. X, resident, age 39, income is 39 lakhs. Second, Mr. Y, resident, age 69, income is 6.9 lakh. And whenever I ask you to calculate tax, you have to add HEC also. वो पक्का है भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, HEC तो ऐड करना ही है. ठीक है ना? थर्ड वन, मिस्टर Z, resident, age 39, income is 3.9 lakh. Mr. Ping Pong, non-resident, age 49, income is 3.9 lakh. Mr. A, resident, yes, all here only, of course. आपकी मर्जी, क्या करना है या साथ में करना है आपकी मर्जी, बट यू हैव टू सॉल्व हियर. Solve right now. Here only. बाद में नहीं, अभी करना है. And just don't do in calculator and tell me, write in the notes up to 2.5 lakh nil, 2.5 to 5 lakh, 5 to 10, properly लिखो बुक में. ठीक है ना? वो सेक्शन नंबर. There is no section number because if you understood, the slab rates and all are given by Finance Act. So it is also given by Finance Act. It's not given by a section number in Income Tax Act. अगर फर्स्ट वाला हो गया तो आप आंसर बोल सकते हैं मुझे. 10,21,000 सबका वही आंसर है क्या? नहीं, थोड़े लोगों का आंसर अलग है. बोलो कैसा किया आप? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू व्हाट रेट? कितना बेटा? 12,000. नेक्स्ट 5 lakh to 10 lakh at 20%. How much it is? Of course 1 lakh. No need of calculator also. 10 lakh. And greater than 10 lakh, 30%. Greater than 10 lakh कितने? How much I told actually? 39. So 29 into 30%. बराबर है ना? 29 into 30% कितना बेटा?
8,70,000. Total 9,82,500. To this I will add HSC. At what rate, beta? 4%. 39? Excellent. So 10 lakh? That's it. Check your answers, guys. Check your answers. Question kya? First answer is 10,21,800. Please check. If you are getting some difficulty, please ask. हाँ 6.9 39 lakhs 6.9 lakh 3.9 lakh 3.9 lakh 8.8 lakhs. हाँ एक सेकंड शिवा 1 सेकंड थोड़ा सा बस थोड़ा और ठीक है बस हो जाए निकाल दूं क्या नेट आ गया क्या बोलो बेटा HC से ऐड करने से पहले रिबेट निकालना है मुझे आ रहा है क्या सुपर तो बीच में जाएगा तो नैनो लिस्टिंग ठीक है अब जान दो नेट कनेक्ट हो गया ना भाई कनेक्ट हो गया बीच में नहीं जाए परफेक्ट थैंक यू हो गया दोस्तों सेकंड वाला हो गया ना सेकंड वाला का जवाब क्या है बेटा समाट में 52 भाई कितना फिगर बोला मैंने 6.9 लाख एज क्या बताया तो क्या होगा अब तो 3 लाख नील अरे बराबर है ना नेक्स्ट 3 लाख टू 5 लाख 5% कितना बेटा 10,000 5 लाख टू 6.9 लाख 20% कितना है 38,000 टोटल एड कितना है 4% HSC 1920 49,000 दोस्त आपको 52 कैसे आया अच्छा एज मिस कर दिए 2.5 लाख ले लिया आप ध्यान रखना बेटा ध्यान रखना क्वेश्चन वही है सेकंड आंसर इज 49,920 नॉन रेजिडेंट के क्वेश्चन पिंग पोंग अरे पिंग लॉन्ग
थर्ड वाला आंसर क्या है सबसे डिफिकल्ट? हाँ, 0 कैसे? रिबेट लिया ना आप 87A? बोलो बेटा। ऑल डन हो गए 5? ओह गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बताया हमने? 3.9 लाख ना बेटा, तो क्या होगा? अब तो 2.5 लाख हो गया बेटा नील। 2.5 लाख टू 3.9 लाख क्या रेट है? 5%। कितना आ रहा है? 7,000। ओ या ओके, करेक्ट 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 करेक्ट। 7,000 लेस rebate under section 87A, that is also 7,000. Net tax will be कितना बेटा? 0। फ्रेंड्स बराबर है ना? और फोर्थ क्वेश्चन मैंने सेम दिया है बट छोटा सा अल्टर किया उसमें। पिंग पोंग, हु इज द पिंग पोंग? नॉन रेसिडेंट। तो क्या होगा बेटा? अप टू 2.5 लाख हो जाएगा नील। 2.5 लाख टू 5 लाख, सॉरी 2.5 lakh to 2.5 lakh to 3.9 lakh at the rate of 5%, which comes to 7,000. Less rebate आएगा क्या? क्यों? नॉन रेसिडेंट। एनआरए मत बोलो, नॉन रेसिडेंट। डोंट गेट योर कंपनी लॉ हियर। उधर एनआरए अलग है, अपने को फैसिनेशन एनआरए बोलने के लिए, बट इट्स नॉट एनआरए, इट्स एनआर, दैट्स ऑल। इज अ नॉन रेसिडेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट इज ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो क्या करेंगे भाई इसका? एड व्हाट? HEC। व्हाट रेट? समबडी इज आस्किंग सर नॉन रेसिडेंट को भी HEC पे करना पड़ेगा क्या? सबको पे करना पड़ेगा भाई, इट डजंट मैटर हु यू आर। कितना टोटल? दैट्स इट। We did not get opportunity to apply 288A and 288B. Why? Already round off A. 288A is what? Rounding off of total income. 288B, rounding off of tax payable. बराबर है? चलो लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? मिस्टर ए रेसिडेंट एज्ड 88, इनकम कितना बताया? 8 पॉइंट। अगर 8.8 लाख से तो क्या करेंगे बेटा? अप टू, एक्सीलेंट। वाई 5 लाख नील? सुपर सीनियर सिटीजन। 5 लाख टू द रेट ऑफ 76,000. Sir, one statement I will tell, please keep in mind always, that is whether you use citizen calculator or cash flow calculator or any other company, answer should come same. If it is coming different, मतलब कुछ तो गड़बड़ है अपने में, कैलकुलेटर में नहीं। मजाक करते हो यार। 66,000 क्या दोस्त? HEC at what rate? कितना बेटा? 30? अरे क्या यार, ये राउंड ऑफ आ रहा ही नहीं है यार। नेक्स्ट कितना? दैट्स इट। आई थिंक वी गॉट अ फुल क्लैरिटी ऑन दिस। कर लेंगे टैक्स आराम से कैलकुलेशन अभी, उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है ना? पक्का? श्योर? आर वी क्लियर इन टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स? चलो लेट्स रिवाइज वंस, विल मूव टू नेक्स्ट। बोलो बेटा, व्हाट आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल? Normal, senior, super senior. But if you're a non-resident individual, you will have only one category, that is normal, and you cannot take rebate. Moreover, correct? No, normal limits 2.5 lakh nil, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 to 10 20%, above 10 30%. Senior up to 3 lakh nil, बाकी सब same. Super senior up to 5 lakh nil, 5 to 10 20%, above 10 30%. Now I'll tell one statement, correct or not you tell. It is illogical to apply the concept of rebate to super senior citizen. Yes, sir. Yes, sir. It is illogical to apply the concept of rebate to super senior citizen. Why? up to 5 लाख कैसे भी नहीं ले तो रिबेट क्या लेंगे भाई?
and don't show extra talent. Up to 5 lakh 0, rebate 12,500, refund 12,500. No boss. Please don't do that. ठीक है ना? Clear है ना? सबको समझ में आया बेटा? Everybody, are we clear with this completely, my dear friends? Can we proceed now? Right. एक special point बारे तो सुन लो. Something very interesting. Listen carefully. Sir, heard of something called KBC? वही है. थोड़े सोच रहे वही है ना, कुछ और पूछ रहे क्या सर? कौन बनेगा? Wonderful. Heard of something called Big Boss? Season Section 14 क्या है बोल? Heads of income. अच्छा ठीक है, छोड़ दो. ठीक है. What all this actually? KBC, Big Boss, reality shows. For the name's sake. Okay. And lottery. क्या क्या लॉटरी क्या बोले? Gambling, betting. First of all, is this lottery, betting, gambling legal or illegal? Huh? Some states it is legal. Some states it is illegal. For example, in Maharashtra, there is no casino. Because casino is not allowed in Maharashtra. But if we go to casino is there. Next point. So now the interesting point I want to tell you very clearly is that there is important concept what I want to tell actually. These incomes are actually known as casual incomes. What income, friends? Now what they told in the law is that, friends, whatever tax rates we discussed so far, 2.5 lakh nil, 3 lakh nil, 5 lakh nil, I did not tell section number for the tax rates because those tax rates are given by Finance Act. जो फाइनेंस एक्ट में दिया उसका सेक्शन नंबर क्या रहेगा, इसलिए उसका सेक्शन नंबर नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? बट देयर आर सम स्पेशल टैक्स रेट्स फॉर इनकम. देयर आर सम स्पेशल टैक्स रेट्स फॉर सम स्पेशल इनकम विच आर गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ. इनकम टैक्स क्लास के एग्जांपल कैजुअल इनकम. इन केस ऑफ विनिंग्स फ्रॉम बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, Dream 11, all this come under that only. Sir, don't tell now, sir, IPL betting is illegal, that is illegal, all that emotions you keep aside. Wait, no feelings and emotions, exactly. Come on. These all casual incomes are taxable at a flat rate. What rate, beta? Of 30%. Under section 115 BB. When I say flat rate, that means you cannot reduce any expenditure, you cannot set off any loss. Straight away pay tax at what rate? 30%. No discussion. So getting clarity, everybody? For example, Shiva Teja has done some betting. Example. And in that betting, I got 1 lakh. Law is telling pay tax at what rate? 30% on that 1 lakh. समझ में आ रहा है बेटा? बोलो बेटा. I have a question now. Shiva Teja went to KBC. I participated in the KBC and I got 12,50,000. ठीक है ना? Example. आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? नहीं चाहिए बेटा, ऐसे बोल रहा हूं मैं. I went to KBC. How much I got? 12,50,000. सुनो. And to go to KBC, I spent 3 lakh. अरे आने का, जाने का, खाने का, पीने का, सोने का, पानी. समझ गया? सिंपल टर्म्स, माई स्टे कॉस्ट, फूड कॉस्ट, गोइंग कमिंग, सब खर्चा कितना हुआ मेरा? 3 लाख. आ रहा कितना उधर? 12,50,000. मुझे टैक्स कितना % पे करना है? किस पे करना है? एग्जैक्टली. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैट रेट. लॉ इज टेलिंग वी आर नॉट कंसर्न विथ योर एक्सपेंसेस. स्ट्रेट अवे पे टैक्स एट व्हाट रेट? 30%. Clear, friends? One time I paid 30% tax like this. Not on betting, gambling. In Deccan Chronicle, DC newspaper, there was Times of India, one article was there which was having a Sudoku. Sudoku pata hai kya? Numbers. So I have quickly finished off. Don't know, the brain was working sharp that time. Quickly I finished off that letters, alphabets which was there as Sudoku, and I have sent it to Deccan Chronicle. That is Times of India, which is now taken over by, DC is now merged with Times of India. So those people have sent me about 1,000 rupees. And I paid tax at 30%.
300 तो ऐसे ही गया, 300 नहीं, 300 कितना गया, और 4% वो भी गया सेस HEC 300 पे 450% मतलब 312 रुपए गए, आया 1000 रुपए, गया 312, बचा 600 रुपए, बट दोस्तों को पार्टी में गया 2000 रुपए। वो बोल रहे यार यार अरे पार्टी तो बनती है, और अरे क्या पार्टी, आया 1000 रुपए, नहीं नहीं, नो वैल्यू, यू कांट द वर्ड, यू चल। बोला ठीक है चलो डिनर करते, कुछ 2500 रुपए का बिल आया, लिटरली आया 1000 रुपए। बोला नेक्स्ट टाइम सॉल्व ही नहीं करते। चलो एनीवेज, आई विल क्लियर दिस पॉइंट एवरीबॉडी। पुट साइड हेडिंग स्पेशल टैक्स रेट, यस, मतलब नहीं है, फिर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब इफ एग्जांपल आई वेंट टू केबीसी, आई गॉट 3 लाख, बट एक्सपेंस व्हाट आई इनकर्ड इज 4 लाख, लॉ इज टेलिंग वी डोंट नो, स्टिल पे टैक्स ऑन 3 लाख, स्टिल पे टैक्स ऑन कितना बोला, 3 लाख ही ना, 3 लाख। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लैट रेट, मतलब खर्चा कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते आप। और ये भी बात बोलो आपको बेटा, सर गुड क्वेश्चन ही आस्क्ड, लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट। इमेजिन आई हैव डन betting telling that India will win, and in that betting I got 4 lakhs. Next match one more betting I've done, and in that I lost 2 lakh. 4 लाख कमाया, 2 लाख गया, बचा कितना, पर टैक्स आएगा 4 लाख पे। Law is telling we will not allow you to reduce expenditure, we will not allow you to set off any loss. जो लॉस हुआ ना, हमको लेना देना नहीं है। इनकम आया क्या, टैक्स भर। That's all. Getting clarity? What did you write? Special tax rate. Underline. Yes. टैक्स रेट है ना, वो सिर्फ उसी स्टेट में अलाउ होगा ना, जिस स्टेट में मतलब अनबैन गैम्बलिंग और वैसा कुछ नहीं ना, इधर भी बेटिंग कर सकते ना। अच्छा ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर महाराष्ट्र में बेटिंग करे तो टैक्स भरना पड़ेगा क्या, 100% भरना पड़ेगा। आप बोल रहे इलीगल है ना सर, इनकम टैक्स इज टेलिंग वन क्लियर कट स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट गेव वन रूलिंग सेइंग दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल इनकम एंड इलीगल इनकम। इनकम इज इनकम, फर्स्ट पे टैक्स देन गो टू जेल, सिंपल। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है इस पे। I mean, I'm not joking. Let me tell you honest fact. There was one case law known as Dr. T.A. Qureshi. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, गूगल में टाइप करिए तो मिल जाएगा। उसमें क्या हुआ, दी वॉज अ डॉक्टर, बट दिस डॉक्टर वॉज डीलिंग इन हेरोइंस, हीरोइंस नहीं, हेरोइंस। हेरोइन मतलब क्या, ड्रग्स। एंड ही टोल्ड आई विल नॉट पे टैक्स बिकॉज इलीगल एक्टिविटी, मेरा पूरा तो ले लिया, फिर टैक्स क्यों भरूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट गेव ए रूलिंग, नाटक मत कर, टैक्स अलग है, इलीगलिटी लीगलिटी अलग है, वो सब बाद में लीगल जुडिशियल सिस्टम देख लेंगे, बट टैक्स तो तुमको पे करना ही पड़ेगा। वो बोला इलीगल है ना, पैसे तो आया ना। I think you're happy. Wonderful. Continue. What's heading you wrote? Special tax rate. Write down. As per section. सर ये सबसेक्शन कुछ है क्या इसमें? If would have been subsection, I would have wrote in bracket. मैं सीधा लिखा, मतलब सेक्शन नंबर वही है 115 BB. BB नहीं भाई, BB. What did you write? As per section 115 BB. As per section 115 BB, comma, winnings from, winnings, WINNINGS, winnings from betting, comma, gambling, comma, horse race, पता है ना horse race? Some places it's very much legal. I think in Maharashtra it is there. I'm not sure, but in Bangalore it is there. Hyderabad is not there. Hyderabad they sometimes do, sometimes don't do. It's there, but race course club is there. Bangalore में तो बहुत ही बड़ा जगह है, White Fields करके एक बहुत बड़ा रेस कोर्स है. Huge betting goes on there. Allowed. Legal means legal. पुणे में भी है क्या? कैंप एरिया के पास है, ठीक है. फिर भी 30% है. Winnings from betting, gambling, horse race, comma, card games, कार्ड पता है ना, कार्ड्स प्रोबेबिलिटी में सीखे ना, 52 कार्ड्स 13 into 4 टमाटर 3 पत्ती सर, वट एवर पत्ती इट इज. कार्ड गेम्स, कमा, क्रॉसवर्ड पजल्स, वही मेरा सुडोकू वाला, ये क्रॉसवर्ड पजल्स,
or any other games of any sort. Crossword puzzles or any other games of any sort. फ्रेंड्स समझ गए क्या लैंग्वेज है? और एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, मतलब कोई भी गेम हो सकता है. एग्जाम्पल बिग बॉस, केबीसी. लॉटरी भी आएगा इसमें डेफिनेटली. एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू स्मॉल एग्जाम्पल हियर. वन सेकंड, लेट मी टेल यू स्मॉल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वेंट टू वन शॉपिंग मॉल, यू परचेज सम ड्रेस. जनरली दे गिव कूपन्स नो, टेलिंग आप नाम और नंबर लिखो, ये डब्बे में डालते, कुछ लॉटरी आता है आपको फोन करेंगे. Imagine suddenly you got one lottery of one car. You still have to pay tax. And practically, let me tell you, वो लोग TDS करके देंगे आपको. For example, you got a lottery of 1 lakh, they will cut 30% and give you only 70,000. Let me honestly tell you, when that person in KBC got 5 crores in front of camera, Amitabh Bachchan gave 5 crores check like this. From top, all flowers, fragrance, everything has happened. And after 2 minutes, camera cut. Check ले लो, फिर देंगे चेक 3.5 करोड़ का. 1.5 करोड़ टैक्स ही क्या है उधर ही. समझ में आ रहा है क्या? ऑन टीवी दे शो दैट दे आर गिविंग 25 lakhs चेक, बट दे विल टेक बैक, कट 30% एंड गिव बैलेंस. समझ में आ रहा है दोस्तों? एवरीबॉडी सर, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड TDS. देयर विल टॉक मोर अबाउट दिस पॉइंट्स. आर वी क्लियर? यस दोस्त, क्या डाउट है? सेम हैपेंस विद crypto. No, that is a different activity. Cryptocurrency is now notified. Till last year, cryptocurrency was not notified. Last year budget, government clearly told that any income coming on cryptocurrency is taxable at a flat 30%. But that is not covered in this section. इस सेक्शन में कवर नहीं. इस सेक्शन सिर्फ कैजुअल इनकम की बात करते हैं. क्रिप्टो करेंसी का अलग ही सेक्शन निकाला उन्होंने. इस सेक्शन में क्रिप्टो नहीं आता है. क्लियर नो? एंड क्रिप्टो में गवर्नमेंट भी इतना होशियार से, मतलब इतना डेंजर स्टेटमेंट दिया मैडम जी बजट में, लास्ट ईयर बजट में, ये साल नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने बता दिया कि अगर कोई बंदे को क्रिप्टो में लॉस आया है उसको इग्नोर करते हैं हम. अगर किसी बंदे को क्रिप्टो में प्रॉफिट आता है, उनको गवर्नमेंट को 30% टैक्स जमा करना पड़ेगा. एंड वन पर्सन फ्रॉम कांग्रेस, दैट इज फ्रॉम राहुल गांधी साइड, ही स्टार्टेड शाउटिंग, आर यू ट्राइंग टू से दैट क्रिप्टो करेंसी इज लीगल इन इंडिया? शी रिप्लाइड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीगैलिटी, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट टैक्सेबिलिटी माय ऑनर. समझ गए क्या? सेम, मतलब लीगल इलीगल हम बात नहीं करते, टैक्सेबल की बात कर रहे हैं. भाई तू टैक्स तो भर. समझ गए ना? मतलब उसका अलग सेक्शन है, 115 BBH करके अलग सेक्शन निकाले. वो फाइनल लेवल पे, इंटर पे नहीं है तो छोड़ दो, इस पे तो कवर नहीं है. ठीक है, डन. माइनर अर्न्स इनकम फ्रॉम लॉटरी पॉसिबल, 30% टैक्स आई विल पे. आई मीन हस्बैंड एंड वाइफ, सॉरी फादर और मदर, हुएवर इनकम इज हायर. No. Debate competition will come under income from other sources. उस पर टैक्स 30% लगता है, उसमें नॉर्मली लगता है. Because that is not like a, it should be like something like suddenly casual income has come. If it should not be like some skill and talent what you exhibited and got it. Getting what I'm saying, no? KBC also is some knowledge game only. Lottery में भी for example lottery मिला, उसमें कुछ आप skill and talent यूज करें क्या? नहीं. तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं जिधर भी आप skill and talent नहीं है, पर वैसे ही आ गया. बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स. कार्ड गेम में स्किल एंड टैलेंट क्या है? थोड़े लोग सोचते हैं यार कार्ड गेम्स मतलब बहुत ही स्किल एंड टैलेंट है. स्किल एंड टैलेंट कुछ नहीं है, सही पत्ता है तो हो गया, नहीं तो नहीं. समझ में आ गया ना? टैक्स तो है, नॉर्मल स्लैब रेट में जाएगा वो डिपेंड करेगा वो स्किल एंड टैलेंट वाला इनकम है या तो कैजुअल इनकम है. दैट्स द रीजन आई रोट दैट वर्ड कैजुअल इनकम. ये बंदा वही है जिसका काम ही है डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, उसका धंधा ही वो है. तब आप इस पे ला नहीं सकते ना. क्रॉस पल्सेस तो आएगा. No, that is what I'm saying. It's just there is a skill and talent. I'm not denying that fact that crossword puzzle skill and talent is there. But in act, they clearly use the word crossword puzzles or any other games of any sort. So if you are debate competition, you are participating, and that is a kind of a game, then definitely 30% tax will come. If it is not a kind of game, then story is different. Competitions. Electronic also possible. Any other games of any sort? Yes. मूवी सीरियल्स में मतलब एक्टर्स की दी और बाती हम उसका ही बोल रहे हैं ना आप?
नहीं, सीधे से actors are actually doing professional activity, no. They are doing a professional activity. Their income will come under PGBP. This is only covering winning from betting, gambling, lottery. It does not cover serial artist income, actors income. No, they are not covered in this. तो समझ में आ रहा है क्या यार? बोलना बेटा, उस तो जवाब दो यार, बोल। नहीं मिलता है ना आपको, कैसे भी टैक्स भरना है 30%, आपको टैक्स 30% भरना ही है ना, तो रिफंड क्यों मिलेगा भाई? आपको टैक्स भरना है, नहीं भरना है? भरना है ना, तो रिफंड क्यों मिलेगा? समझ में आया क्या? यस, 1 सेकेंड दोस्त। Sir, if you remember, I told you that we are not going to look at any Google. Why? Emotions. नहीं चाहिए. Law. 115 BB. See this language no once. जो अभी तक क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, एक बार पढ़ो इसको. टैक्स ऑन, इधर से जाते, टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, और गैम्बलिंग or betting of any form or nature whatsoever. और लाइन देखो, any other form or nature whatsoever, मतलब कोई भी गेम आ सकता है ना उसमें. सर स्पीक आउट सर. और उस पर क्लियरली बोल दिया टैक्स रेट इज व्हाट रेट, इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 30%. सर समझ में आया क्या? बोलना बेटा, एवरीबॉडी. हाँ बोल. क्रिकेट में सर, क्रिकेट में फिर जो प्लेयर्स को मिलता है फिर, अरे दैट इज प्रोफेशनल एक्टिविटी नो बॉस, वो इसमें क्यों आएगा बोल? अरे यार आप गेम्स का बात सर, अरे गेम्स की बात कर रहे हो तो आप ये भी तो सोचना यार. विनिंग स्टार्टिंग पूरा इंग्लिश पढ़ो यार. टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी में जीते या क्रॉस पजल में जीते या तो रेस में जीते या तो कार गेम में जीते या कुछ और गेम में जीते, जो प्लेयर है वो जीतता नहीं है, उसको प्रोफेशनल फी देते. आर रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया फॉर क्रिकेट, BCCI, दे विल पे रेम्युनरेशन टू द प्लेयर्स फॉर प्लेइंग द क्रिकेट मैच. दैट इज द प्रोफेशनल इनकम, दैट इज नॉट कैजुअल इनकम. फर्क में समझ में आ गया ना? कोई विनिंग हुआ है, कुछ जीत गए, उनको कैजुअल इनकम लेके आएंगे, टैलेंटेड कैपेबिलिटी वाला वो इस कैटेगरी उसमें जाएगा. मतलब आप देखेंगे तो किधर भी नहीं लिखा है कि स्किल एंड टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, कुछ नहीं लिखा है. उन्होंने इतना ही बोला है भाई तुमने कुछ गेम खेला है, उसमें कुछ जीता है, तब 30% टैक्स पे कर. दैट इज प्रोफेशनल इनकम ओनली. अरे कैजुअल है मतलब सी हियर if you see here what language they used is tax on winning from lottery, crossword puzzles, horse race, card games and any other games of any sort. You see the continued English language there. Any other games of any sort or gambling or betting. That means you have to understand that they are talking about games like betting, gambling. If they would have covered cricket, they would have used the word sports. Sports बोलते थे ना सर, उन्होंने स्पोर्ट्स बोला ही नहीं. इधर क्या बोला उसमें? एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट. क्लियर है ना? एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और गैम्बलिंग और बेटिंग. सो वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दोस काइंड ऑफ गेम्स लाइक कार्ड गेम्स एंड एनी अदर गेम्स. सी यू हैव टू इंटरप्रेट द इंग्लिश लाइक दिस बेटा. आप समझो ये चीज. कार्ड गेम्स एंड एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट मीन समथिंग लाइक गेमिंग एक्टिविटी यू आर डूइंग, बट दैट इज अ स्पोर्ट. क्रिकेट इज अ स्पोर्ट मैन. सर क्लियर? फिर भी 30%. कोई भी हो, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कुछ लेना देना है नहीं, आप कोई भी हो 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा. स्पोर्ट्स की बात ही मत करो. स्पोर्ट्समैन तो नॉर्मल टैक्स रेडी लगेगा. दिस ओनली फॉर विनिंग फ्रॉम बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस और एनी गेम्स. विनिंग्स फ्रॉम रेस, समथिंग लाइक लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, बट दैट रेम्युनरेशन व्हिच इज पेड दैट विल नॉट कम हियर. One second, his doubt is not clarified. 115 BBA में लिखे हुआ है क्या? किधर लिखा है? टैक्स ऑन स्पोर्ट्स का. अरे ये तो सीए फाइनल में आप पढ़ने वाले, उसका सेक्शन नंबर रेट अलग है थोड़ा सा. जो एडवर्टाइजमेंट में एक्ट करते हैं उनका रेट अलग है. ये 30% वाला तो नहीं है ना? समझ गए ना? ये 30% वाला तो नहीं है. और सिर्फ आप पूछ रहे तो मैं इसलिए आपको ओपन करके बता देता हूं. देख लो. Here, this what is talking, being a sportsman
for participation in India, for advertisement, for contributing articles. ये अलग ही है, ये विनिंग फ्रॉम बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी की बात ही नहीं कर रहा है, ये सेक्शन ही अलग है बिल्कुल. समझ गए आप? बोल दोस्त कार्तिक, आपका डाउट क्या है? सपोज कोई बेटिंग एक्टिविटी हो जैसे हम्म. ड्रीम 11 उसमें ड्रीम 11, हाँ उसमें सपोज कार जीता कार जीता, हाँ कैश प्राइस बट वंडरफुल, गुड क्वेश्चन. का क्वेश्चन समझ में आया क्या? बेटिंग में पैसे पैसे नहीं आए, कार आया, तो कैसे टैक्स पे करते? इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग दैट बेटिंग, दिस इज अ लॉ प्रोविजन. इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग बेटिंग एंड यू गॉट ए कार, it is my responsibility to do TDS and pay to the government. If it is cash, when I'm paying you 1 crore, I will cut 30 lakhs and give you balance. If it is cash, I will cut 30 lakhs and give you 70 lakh. But I'm not giving you cash. What did I give you? Car. I cannot tell engine I will keep, body you take. ऐसा बोल सकते क्या सर? नहीं बोल सकते. तो उसमें उस केस में एक्ट क्या बताया बोलो? In that cases where consideration is in kind, winning is in kind, then law told whatever is 30%, please collect from the winner and then release the car. मतलब मैं आपको बोलूंगा कार्तिक भाई आप जीत गए ना, उसका 30 मतलब कार 10 लाख की है, 3 लाख रुपए इधर जमा करो, फिर गाड़ी लेके जाओ. आप बोलेंगे सर 3 लाख नहीं है तो लोन लेके आओ, वो भी नहीं है तो गाड़ी छोड़ दो. 70%? हाँ 70% डिस्काउंट हो गया इनडायरेक्टली. ठीक है सर, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आई ये बात? यार बोलना बेटा. आर वी क्लियर एवरीवन? सर आई थिंक यू गॉट अ क्लैरिटी. स्पोर्ट्स से वो अलग है, ये गेम्स अलग है. ये विनिंग की बात कर रहे हैं, जीते कुछ. अब ये मत बोलो कि गेम्स, अब क्रिकेट में भी जीतते हैं हम लोग, वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो प्रोफेशनल एक्टिविटी हो गया. ये तो बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी की बात कर रहे हैं. बराबर है ना? डन. चलो गाइस, आई विल गिव वन क्वेश्चन नाउ, टेल द आंसर, कम ऑन. There is one person, Mr. A, who is aged 55 years. Somebody is asking something? बाकी क्या है लिखे ना हम लोग? नहीं लिखे क्या? क्या लिखे हम लोग? Winning from betting, gambling, horse race, card games, crossword puzzles or any other games of, उतना ही लिखे क्या? Oh, is taxable at a flat rate of क्या बेटा? 30%. ठीक है. अब ये देखो बेटा, मिस्टर ए, एज हाउ मेनी इयर्स? दिस जेंटलमैन टोटल इनकम इज 30 lakh. चलो बेटा, दिस जेंटलमैन व्हाट इनकम? टोटल इनकम इज 30 lakh, out of which lottery income is 6 lakh. इनका इनकम कितना है एक्चुअली? 30 लाख. उसमें लॉटरी कितना है? चलो निकालो टैक्स. ट्राई कैसा निकालते हुए देखते हैं. My dear friend, I think you are totally clear with that, no? Don't bring that cricket match sports here. This section is only about winning from betting, gambling, lottery, those kind of games. थोड़ा सोच के करना बेटा, थोड़ा सा.
कर दिया, कितना है 7,45,000 41 वही है आपको भी 741 आफ्टर एडिंग सेस ओके बोलना कोई बात नहीं 733,800 ओके 733,800 आपके साथ है कोई हाँ 741 741 741 741 लॉटरी इनकम में भी से सेट करते हैं obviously सर 741 sir what we have to do for these kind of questions you know listen कितना इनकम है पूरा सा 30 बोला क्या मैंने ठीक है टोटल इनकम कितना है 30 lakhs correct no first on lottery income 30% under section 115 BB बराबर है कितना है वो 6 lakh into 30% 1,80,000 on balance कितना है balance on balance 24 lakh we will start doing our normal routine story. What is normal routine story? 2.5 lakh nil 2.5 lakh to 5 lakh 5% 12,500 5 lakh to 10 lakh 20% which is 1 lakh above 10 lakh 30% which is 4 lakh 20,000 total tax 5 lakh total tax on 24 lakh now total tax including lottery income 7 lakhs 12,000 to this I will add HEC at the rate of 4% 28,000 total figure 7 lakhs बेटा समझ में आ रहा है क्या आपको so basically what we have to do is first we have to separate lottery income and on that lottery income calculate tax at what rate on that lottery income calculate tax at what rate 30% on balance slab rates अपना नॉर्मल कहानी चालू हो जाएगा correct my dear friends I repeat once again on total income first bifurcate lottery income and on that lottery income calculate 30% on balance please apply slab rates बेटा सबको क्लियर है आप लास्ट में उसको 30% नहीं दिखा सकते उसको अलग से दिखाना ही पड़ेगा लॉटरी का बेटिंग का गैम्बलिंग का टैक्स अलग से दिखाना पड़ेगा बिकॉज उसका अपना अपना स्पेशल रेट है विच इज कवर्ड अंडर 115 BB आर वी क्लियर यस बेटा बोलिए डाउट क्या आपका सेग्रीगेट नहीं किया तो भी सेम आएगा बट सेग्रीगेट करना जरूरी है बिकॉज वेरी सून आई विल टीच यू समथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसका भी अपना अपना स्पेशल रेट्स है when I give you a combined question where that this everything is combined it is important for you to segregate and calculate tax अभी तो सेम आएगा बिकॉज ये भी 30% है वो भी इनकम ज्यादा है बराबर है ना अगर आप अज्यूम करो मैं बोलूंगा 8 लाख इनकम है 8 लाख इनकम है जिसमें 3 लाख लॉटरी है तो आप क्या करेंगे तब तो सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा ना इधर आपको सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो भी आपको आंसर सेम आया बिकॉज 10 लाख के ऊपर इनकम है बराबर समझ गया ना बेटा आर वी क्लियर प्लीज रिप्लाई कम ऑन एवरीबॉडी चलो फ्रेंड्स we'll take a short break but before the break one more last time tell me guys what is section 27 बोलो 27 29 225A 231 एक सेकंड ना I didn't like that color 27 29 225A 231 234 section 3 section 4 87E ये बोल भाई रिबेट किसके लिए किसके लिए मतलब अपने लिए अरे क्या है भाई रेजिडेंट इंडिविजुअल
whose total income does not exceed 5 lakh. कितना है रिबेट? तो सीधा मत बोल 12,500 or tax payable, whichever is पूरा full. So please understand that if you don't tell full, meaning will change, sir. My name is Shiva Teja. If you call me Shiva, it's okay. If you call me Teja also, it's okay. If you call me She, अरे कैसा होगा यार ऐसा? Wherever you want, don't dissect the concept. It is tax payable or 12,500, whichever is exactly. Clear है ना बेटा? चलो 288A, 288B, 115BB, कैजुअल इनकम्स. ये बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी मत बोलो यार, सिंपल वे में बोलो कैजुअल इनकम. अब मुझे बताओ कि प्लेयर के लिए, स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर के लिए वो कैजुअल इनकम है क्या? लॉजिक बैठ गया ना? अरे ये भी कलर अच्छा नहीं दिख रहा यार. चलो बोलो 27, 29, 225A, 234. सब लोग पैटर्न बैठ गए दिमाग में. सेक्शन 4, सेक्शन 3, प्रीवियस 288A, 288B. Clear, no? 115BB, 87A, rebate. It's only for resident individual whose total income does not exceed 5 lakh. How much is the rebate? 12,000. Or tax payable, whichever is lower. Correct, my dear friends? Who gave power to levy income tax? Entry number 82. Has given power to central government to levy income tax. सर क्लियर है ना? पक्का समझ में आ गया ना? एक बार बिना देखे मुझे ये बताओ कि प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स क्या है. पहले क्या निकालते हैं हम? रेजिडेंशियल स्टेटस. बराबर है ना? बोलो यार. somebody is asking सर कितने बार पूछोगे सर? हम ऐसे ही पूछते सर. चलो फर्स्ट स्टेप क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस. उसके बाद क्या निकालेंगे? इनकम. कितने हेड्स ऑफ इनकम है वो तो पता है अपने को यार, फिर नहीं पूछूंगा. बट वो 5 ऐसा है करके किसने बताया? शिवा सर ने. अरे सेक्शन 40 बराबर है, हेड्स ऑफ इनकम. 5 हेड्स ऑफ इनकम आ गया, उसको टोटल कंबाइन कर तो क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम. फिर क्या निकालेंगे? डिडक्शंस. फिर क्या आया? टोटल इनकम. उसके ऊपर टैक्स निकालो इंक्लूडिंग सेस. ठीक है ना? लेस क्या करेंगे? टीडीएस एडवांस टैक्स. अगर टीडीएस एडवांस टैक्स ज्यादा हुआ तो रिफंड मिलेगा, कम हुआ जेब से पे करना पड़ेगा. हो गई ना यार बात? लॉजिक बैठ गया ना यार? We are just in third day and we got a clarity on what exactly income tax is all about. समझ में आ रहा है ना बेटा? Take a break. After break we'll talk more. Thank you.
check. Yeah. चलो हो गया ब्रेक. Yes, get back, guys. Come on. So, friends, we were talking about. So, friends, we were discussing the concept of which section, my dear friends? Just 115 BB, which talks with what? Casual incomes, winnings from lottery, crossword, puzzles, card games, or any games. In short, we say that it is what income? Casual incomes. Casual income are taxable at what rate, my dear friends? They are taxable at a flat rate of 30%. Are we clear with this point, everybody? Friends, I hope we got good clarity on this so far. What is section 87A? Rebate. The concept of rebate is only for whom? Resident individual whose total income does not exceed 5 lakh. How much is rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. पक्का क्लियर है? यहां तक सबको बात समझ में आ गया बेटा? Sure, my dear friends. Can we proceed further? So, which section has, which entry number has given power to government? 82 of Union List of 2 Article 246 of the Constitution. Good. 27. Section 14. Chargeability section है. Heads of income. Section 4 is chargeability. 14 is heads of income. How many heads of income are there? 5. What are those 5? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. Clear है? Wonderful. क्या हो बेटा? कुछ कंसर्न है? एसी चाहिए नहीं चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? बोलो तो. उसका ही डिस्कशन चल रहा है एसी का, समझ गया मैं. डिस्कशन तो उसी का है. Can I proceed? ठीक है, done. Come on. What is 87A? Debate. 288A. Rounding off of income. 288B. Rounding off of tax. 115BB. Casual incomes. What rate casual incomes? Flat rate of 30%. I think we are clear with this point, everybody? Right, come on. So friends, let me teach you some interesting concept today. That is, section 4, already we have done. What is section 4? क्या बोलता हो section 4? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in the assessment year. एक और बार last please. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. But let me tell you friends, there are 5 exceptions to this concept. When I say exceptions, what does that mean? नहीं प्रोविजो मत बोलो, ये एक्सेप्शन है. वैसे प्रोविजो बोलते प्रोवाइडेड लिखते थे अलग से. मतलब मीनिंग क्या है उसका? एक्सेप्शन मतलब क्या? अगेंस्ट द बेसिक रूल. अगेंस्ट द व्हाट इज द बेसिक रूल? चार्जेबिलिटी. क्या है वो? इनकम विच इज अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर. उसका एक्सेप्शन है. मतलब क्या समझा? Income earned by assessee during the previous year is chargeable to tax in the previous year itself. Exception मतलब वही हो गया ना. नॉर्मल रूल क्या था? जो प्रीवियस ईयर में इनकम आएगा उसका चार्जेबिलिटी असेसमेंट ईयर में जाएगा. बट हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं जो बेसिक रूल का अगेंस्ट है. मतलब पीवाई में जो पैसा आएगा भाई पीवाई में ही चार्जेबल हो जाएगा. इसमें 5 केस है बेटा. एग्जाम में एक बार 2 मार्क के लिए आए. व्हाट आर द 5 केसेस? जस्ट पॉइंट्स दे आर. राइट 5 पॉइंट्स, गेट योर 2 मार्क्स. ठीक है? Listen, the 5 exceptions to section 4. 5 exceptions to what beta? Section 4. First listen, then you write. First listen. First point. Shipping business. What business, my dear friends? Of non-resident. Shipping business of? Sir, बहुत logical सी बात है ये. क्यों बोलूं? There is a non-resident, a foreign guy who is coming to India, making money in India. One fine day, he is getting into the ship and telling, bye. Law is telling, beta, bye, bol, get lost, but pay tax and get lost. अरे समझ गए आप? निकल जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but tax pay करके निकल. Friends, are you understanding everybody? What is the basic rule first of all? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax and assessment year. ये बंदा कौन है?
शिपिंग बिजनेस कर रहा है, मतलब शिप में सामान लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, करेक्ट है ना? वो गया, वापस आने का गारंटी है क्या? ओ ऐसा ऐसा कोई बंदा है क्या जो बोलेगा मैं असेसमेंट में वापस आ जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस, आई विल कम बैक एंड पे टैक्स? अरे विच जनरेशन वी आर इन नाउ? 21st। वो जनरेशन नहीं भाई, सेंचुरी। हाँ ठीक है, whatever it is. Shipping business of what, my dear friends? Non-resident. So please pay tax and then go. Are we clear with this? Everyone? Second point. आराम से समझ में आ जाएगा ये भी. Persons leaving India. Persons leaving India permanently or for long time. That means somebody who is going out of India permanently is going, or for a long time is going. Law is telling no problem, please go, but please pay tax and go. Let's discuss some practical points in this. Yeah. Second point, what did we write? Persons leaving India permanently or for long time. This question came in exam for 2 marks, no? And that time I was correcting papers. Sometimes while correcting papers, I told you I have done for correction of papers in 15, 16, 17, 3 years I have done that. And sometimes the BP will go up and down while correcting papers. बच्चे क्या लिखते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है. स्टूडेंट लिखा पर्सन्स लिविंग इंडिया, LIVING. अरे मेरे भाई, जो इंडिया में है उसकी बात नहीं कर रहे, जो जा रहा है उसकी बात कर रहे. सर LIVING is different, LEAVING is different, no? PRINCIPAL is different, PLE is different. You should not tell principles of life, PRINCIPALS. अरे भाई, meaning will change, boss. One letter here and there. Correct, no? Yes, my dear friend. अगर आपका गर्लफ्रेंड का नाम रिया है, गलती से प्रिया लिख दिए, कदम हो गया, धमाल. अरे एक्सपीरियंस नहीं, एग्जाम्पल. मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, हम बहुत ध्यान से लिखते हैं. हाँ ठीक है, चलो. So what is the first point? Shipping business of non-resident. Second, persons leaving India permanently or for long time. Let's discuss some practical point here. That is, if somebody is going out of India, how will we know whether he is going permanently or not, or long time or not? कैसे मालूम पड़ेगा? उधर का क्या? हाँ कुछ तो क्या है वो, सिटीजनशिप. पूरी भाई सिटीजनशिप क्या भाई? सिटीजनशिप इतना आसान थोड़ी है मिलना कोई कंट्री का. सिटीजनशिप नहीं है. सर इफ यू हैव टू गो टू फॉरेन, what should we take and go? Ticket. Oh, ticket. Okay. टिकट के अलावा और क्या चाहिए भाई? मनी. अरे यार, passport. The first thing is passport. There are few countries which will allow you to enter their country even without visa also. But the point to be noted is passport who will give? ये मतलब ये क्या होता है? अरे उससे पूछा मैंने, पासपोर्ट कौन देगा? ये क्या है भाई? Who will give a passport, sir? Indian government. I mean, for us, India will give a passport. What is visa? Which their government will give. Basically, visa is a permission given by the foreign country allowing us to enter their country. अरे इतने पिक्चर देखे यार आप लोग, वो देखे क्या बजरंगी भाईजान? सलमान खान जाता है ना? क्या बात है यार. उसे बोलता ना बिना वीसा का कैसा घुस के आ गए, तारों की निचरी. समझ में आ गया ना दोस्त? So visa is a permission given by the foreign, listen now, important. Visa is a permission given by the foreign country allowing Indian persons to enter their country. So now when I take a foreign country visa and I'm going to that country, what happens is that in the airport there are some counters known as immigration counters. Pictures में देखे क्या? Immigration counter where officer is sitting, he will put a stamp on our passport telling everything is okay, everything is proper. बराबर है ना? उसमें चेक करेगा कि वीसा कितने महीने का वैलिड है. अगर आपने जो वीजा लिया वो 10 दिन 15 दिन कुछ नहीं बोलेगा. बट इफ द वीजा इज फॉर 2 years और more than 1 year or it's for 2 years, that customs officer who is sitting there, customs immigration officer sitting there will tell, please bring one certificate known as ITCC.
वो सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर आपको अंदर जाने देंगे हम लोग. ITCC स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट. ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं. ये आएगा पर वो नहीं आएगा. वो ITCC वो सब पूछते नहीं एग्जाम में, बट आपको समझने के लिए समझा रहा हूं मैं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड नो हाउ विल दे नो. अरे आपको पता होना चाहिए ना, हाउ विल दे नो परमानेंटली है. तो अगर आप बोलेंगे 1 साल के ऊपर जा रहे हैं, वो ऑफिसर बोलेगा कि भाई तू क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकाल, तो अपने को अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. और अपने इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलेगा, भाई तेरे को सर्टिफिकेट में दूंगा, पर जितना तू कमाया पहले तू टैक्स पे कर, फिर मैं सर्टिफिकेट दूंगा. तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज बीइंग टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. हो गया ना वही चीज. सर पता चला क्या कि गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ता है, या फिर बिल्कुल मत पूछो कि गवर्नमेंट को मालूम पैसा कैसे पड़ेगा कि ये परमानेंटली गया या टेम्पररीली गया. क्लियर, साफ मालूम पड़ जाएगा. अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? फ्रेंड्स स्पीक आउट. ब्रिलियंट. कम ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? Shipping business of non-resident. Number 2, persons leaving India permanently or for long time. This word long time is not defined in the law. But आप लोग कॉमन सेंस यूज करके बताओ बेटा लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हो सकता है? मोर देन 1 ईयर. बिकॉज लेस देन 1 ईयर है तो कैसे भी वापस आएगा ना. जब वापस आया मतलब असेसमेंट में टैक्स पे करेगा ना. अब ये मत पूछो सर वापस नहीं आए तो कैसा, वापस आएगा. अगर उसको नहीं भी आना है ना, वो कंट्री वाले इसको उठा के फेंक देंगे. समझ में आ रहा है क्या? एंड इन सम कंट्रीज लाइक दुबई, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सम कंट्रीज दे हैव गॉट स्ट्रिक्ट रूल्स. इवन आफ्टर वीजा इज ओवर, इफ यू स्टे इन दैट कंट्री, पनिशमेंट इज हैंग टू डेथ. हैंग टू डेथ मतलब वीजा है 2 महीने का, आप 2 महीने के ऊपर वो कंट्री में स्टे कर रहे, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना यार. और चुप चुप बैठेंगे यार. इंडिया जैसी जगह थोड़ी है कि जो मन में आए कर लेंगे. करेक्ट है ना? यहाँ पे जो मन में आए वो करेंगे यार. यहाँ पे गाड़ी ऐसा चलती है, हवा में चलती है, नीचे से चलती है, कहां नहीं यार. कुछ भी कर सकते हैं इधर इंडिया में हम लोग. सिग्नल वहां पे है पर हम बीच में रहेंगे और वो बोलेगा अरे क्या चला रहा रे, फिर हम उल्टा बोलेंगे तेरे बाप का रोड है क्या, फिर वो बोलेगा तेरा बाप का रोड है क्या, वो बोलेगा नहीं तेरा बाप का नहीं मेरे बाप का नहीं, तो चुप बैठ. हो गया ना बस कहानी. और पूरे से एक जगह में तो इतना वन वे मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा वन वे है, क्योंकि लोग 2 साइड से आ रहे हैं. करेक्ट है ना यार? मतलब फ्रीडम लेवल्स आर सो हाई इन इंडिया बॉस, बट इन फॉरेन इट्स नॉट लाइक दैट. आई स्टिल रिमेंबर when I went to Dubai, just 1 minute out of subject, 1 minute only. Yeah, that is, I still remember when I went to Dubai, I took international driving license. मेरा एक दोस्त है वहां पे जो जॉब करता है, is one CA only, but is working in Dubai, very much settled in Dubai. So उसके पास कार है वहां पे, वो बड़ा गाड़ी कुछ लिया, तो उसके चक्कर में मैं इधर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके गया. I took international driving license and then took his car and I was enjoying in this car in Dubai, roaming on the streets of Dubai. I was enjoying driving. Okay, at one place what happened, signal was there, this was the line. ये लाइन इंडिया में क्या करते हैं हम, लाइन यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे खड़ा होंगे, बराबर है ना यार. एंड हियर दिस वाज द लाइन, आई जस्ट वेंट 1 inch बिफोर दैट लाइन, ओनली 1 inch, लिटरली 1 inch. उसका 200 दिरहम्स कट गए. 200 दिरहम्स मतलब 18 रुपीज पर दिरहम, विच इज 3600 रुपीज. एग्जैक्टली दैट ओनली विल कम. 200 दिरहम मतलब इतना याद है, मतलब वो भाई साहब बेचारा रो गया था. 200 दिरहम्स कट गए. कट गए मतलब आप ये सोचो कि उधर पुलिस नहीं कुछ नहीं, हर सिग्नल के पास, हर जंक्शन के पास देयर इज अबाउट द स्ट्रीट लाइट देयर इज अ स्कैनर, एंड फॉर एवरी कार देयर इज अ फास्टैग. फास्टैग पता ना यार अपने को, टोल गेट में देखते ना हम लोग, अपन तो सिर्फ टोल गेट में कर रहे वो काम. इधर क्या है, वो बारकोड स्कैनर जो है ना, वो स्ट्रीट लाइट के पास एक स्कैनर है. दैट स्कैनर विल स्कैन दिस, ऑटोमेटिकली अकाउंट से पैसे डेबिट, अकाउंट से पैसे डेबिट. मेरे दोस्त को ठप बोल के मैसेज आया, 200 दिरहम्स हैव बीन डिडक्टेड. दैट पर्सन कॉल्ड मी, अरे शिवा भाई क्या करा भाई? बोला मैं क्या करा रे, कुछ भी नहीं. देन ही टोल्ड तू फोन बात मत कर, पहले बाजू में रुक, नहीं तो 500 दिरहम कट जाएंगे, तो बाजू में गाड़ी रोक फिर बात करेंगे. देन आई स्टॉप द कार एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड. देन ही टोल्ड अरे 200 दिरहम्स कर गए, क्रॉसिंग ऑफ जंपिंग ऑफ सिग्नल. तू क्या किया? जंपिंग सिग्नल? अरे वो तो बहुत दूर था. फिर मुझे रियलाइज किया कि मैं 1 इंच आगे आया. तब ओम शांति ओम डायलॉग याद आया, 1 इंच का कीमत तुम क्या जानो, 3600 रुपए. लिटरली you're getting what I'm saying is, so that level of strict rules are there in some country where it's not so easy to stay back even after visa is over. It's not an easy thing. Are we understanding, my dear friends? Chalo guys, come on, get back. What is section 4?
income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. And we're talking about exceptions. What a first exception? Shipping business of non-resident. And let me tell you, this is given by section 172. Which section? 172. Second point, section 173. Very good. 4. 173 is a different concept that is there in CA final. Don't worry. Chalo, what the first point? Shipping business of non-resident. Second, persons leaving India permanently or for long time. Third one, AOP, BOI or AJP, which is formed for a short duration or purpose. Short duration or purpose. I repeat again. AOP, BOI, AJP, which is formed for a short duration or purpose. Getting clarity, everybody? Say your good name. Tejas. Okay, wonderful. Teja and Tejas. Both of us together decided to do one business. We both together started business. We did not create partnership firm. We did not create company. We did not create LLP. What do you call us? Body of individual. हम लोग 4 महीना बिजनेस चलाए, फिर बंद कर दिए. लॉ इज टेलिंग बंद कर, बट टैक्स पे करके बंद कर. समझ में आ रहा है क्या बेटा? AOP, BOI, AJP, which is formed for what purpose? Short duration or purpose. And this word short is not defined in the law. अब आप लोग कॉमन सेंस करके बोलो शॉर्ट का मतलब क्या हो सकता है? Less than 1 year. लॉजिक से बात है यार, अगर 1 साल के ऊपर चलने वाला है तो अगले साल में पकड़ेंगे ना यार उसको. हम लोग 4 महीने बिजनेस करके गायब हो जा रहे. सर बोलो बेटा. Everybody. So this point is given by section 176. Wonderful. 174A. चलो. ये क्वेश्चन पूछने वाला है, सर हम 4 महीना बिजनेस करके बंद करें तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा? ये क्वेश्चन है क्या? ठीक है, पहले इसका जवाब दूंगा मैं. एक मिनट. अगर 4 महीना बिजनेस करके बंद करेंगे तो गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा? ये बड़ा क्वेश्चन है जो आ सकता है बाद में दिमाग में. लॉजिक इतना है कि गवर्नमेंट को मालूम पड़ना बहुत ही प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, बट द डे व्हेन दे गेट टू नो दे विल चार्ज tax along with interest as well as penalty. The day when they get to know. अब आप पूछ सकते, सर पक्का मालूम पड़ेगा क्या? नहीं बोल सकते. सर पक्का नहीं मालूम पड़ेगा क्या? नहीं बोल सकते. If not immediately, but definitely. अरे बराबर है यार दोस्त. Correct, no? You saw some girl. Is there a guarantee she will like you? No. Is there a guarantee she will not like you? Yes. ठीक है, अब आपका डाउट पूछिए सर. ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, इनको छोड़ के अगर कोई और बिजनेस करे, जैसे पार्टनरशिप हो गया, मतलब नहीं वो कवर नहीं है, सिर्फ एओपी बीओ एजेपी कवर्ड है. द रीजन ओनली दीस 3 आर कवर्ड बिकॉज वंस यू क्रिएट अ पार्टनरशिप फर्म ए सेपरेट एंटिटी इज फॉर्म्ड. Once you create LLP, separate entity is formed. When you create company, separate entity is formed. And I'm sure you know that in foundation you learned partnership is governed by Partnership Act 1932. LLP is governed by LLP Act 2008. Company is governed by Companies Act 2013 or under earlier law Companies Act 1956. सीखे ना लॉ क्लास में वो. हाँ ठीक है, वो छोड़ दो, उधर ही सीख लो. समझ गए ना? चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट विद सेक्शन 172. Second, persons leaving India permanently or for long time with section 174. Third one, AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose with section 174A. What is 87A? Wow. 288A, rounding off of income. 174A, India. Oh my God. वो 225 है. वो नेक्स्ट पूछने वाला था मैं. वो बोल रहे सर नेक्स्ट का ही मैं आंसर दे रहा हूं आपको. अरे तो रिएक्शन मत दे भाई, आंसर देना प्लीज. डाउट ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले पूछा वीजा कौन देगा, ऐसा बोला. अब 174 क्या है बोले तो ऐसा बोल रहे हैं. डाउट है, बोलना दोस्त. पर्सन मतलब इंडिविजुअल. हाँ वो क्लैरिटी रहना चाहिए. हाँ इंडिविजुअल बराबर. परमानेंटली छोड़ के जा रहे हैं पर उसका बिजनेस तो भी उसके बाद भी कंटिन्यू होने वाला है इंडिया. तो इंडिया में उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है क्या?
इंडिया में उसका कोई बंदा है क्या? कोई तो रहेगा ना, उसको हम बोलेंगे, दोस्त बोल, डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी. सुबह आते उसका डाउट वही था, उसका केस एग्जाम्पल. तो समझ गए क्या दोस्त? क्लियर है? चलो, और कुछ डाउट है? नहीं. व्हाट इज सेक्शन 4? Chargeability section. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. How many exceptions are there? 5. How many are done? What are the 3 section numbers? What is that? Shipping business of non-resident persons. Leaving spelling? Sorry to ask like that because experience is talking. Yeah. Persons leaving India permanently or for a long time. Third. AOI नहीं भाई. AOP, BOI. थोड़े लोग लिख रहे एग्जाम में AOI, BJP. AOI, BJP क्या होता है? AOP, BOI, AJP, which is formed for short duration or purpose. Next point. आपका डाउट हो गया ना? नेक्स्ट. Persons likely to transfer property by क्या कर रहे हो? Persons likely to transfer property to avoid tax. I'll give a classic example so that full clarity will come. Let us say Shiva Teja has got one property which I gave it on rent. Rental income where will I show? Rental income I'll show under house property. पता है ना भाई अपने को? Right. I've got one property which I gave it on rent, and I told the tenant, you do one thing. Don't pay me monthly rent. Directly pay 12 months rent on 31st March. केस समझ गए क्या? I told my tenant, don't pay me monthly rent, directly pay 12 months rent on 31st March. And I told, and what I had done is, on 29th March, I transferred property to Tejas. Property Tejas को transfer कर दिया. And on 6th April, again I took back. When did I give to Tejas? 29th March. When I took back, tenant will pay rent when? 31st March को ओनर कौन है? So he will become taxable. So I tried to play some game in order to avoid tax. आप ये बोल सकते हैं, सर क्या फर्क पड़ेगा? आप भी तो टैक्स पे करते थे, तेजस भी तो टैक्स पे करेगा, क्या फर्क पड़ेगा? मेरा इनकम साल का 25 लाख रुपए, 30 लाख, 50 लाख रुपए है. तेजस का इनकम साल का 2 लाख रुपए है. अगर रेंट मेरे को आएगा, मैं 30% टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर रेंट उसको आएगा, वो बोलेगा 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%. टैक्स रेट फर्क पड़ेगा ना बेटा? बिकॉज इन इंडिया व्हाट सिस्टम वी हैव? Slab rates. And what kind of tax, what kind of nature it is? Progressive in nature. Higher the income, higher the tax. अरे बराबर नहीं यार? Speak up बेटा. Exactly. Persons likely to transfer property to avoid tax. Law is telling if you try to play these kind of games, we'll tax you in previous year itself. And the day when we catch, tax, interest, penalty, सब पकड़ेंगे. Sir, clear? And this concept is given by section 175. Are we clear with this? Everybody, sir? What is chargeability section? Section 4. Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. How many exceptions are there? 5. 4 points are done. What are the 4 points, my dear friends? Shipping business of non-resident persons leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Persons likely to transfer property to avoid tax. 172, 174, 174A, 175. Are we clear? Everybody saw. प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय तो फिर एक 2 मिनट. अब बोलो सेक्शन 27, 29, 225A, 288A, 172, shipping business of non-resident, 174A,
AOP, BOI, AJP, formed for short duration or purpose. 174B नहीं है, नहीं बताया, अरे है ही नहीं भाई इनकम टैक्स एक्ट में. सर क्लियर है ना? बोलो बेटा. सेक्शन 4, सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम. 87A रिबेट. सर क्लियर है ना बेटा? बोलो. Everyone, my dear friends, all of us. Hi. What is 172? Shipment business of non-resident. Second वाला क्या है? 174 क्या है वो? Persons leaving India permanently or for long time. Next point क्या है? 174A AOP, BOI, AJP, which is formed for short duration or purpose. Next. 175 persons likely to transfer property to avoid tax. Tax. How I avoid tax? But tax likes me. I cannot avoid. Wonderful. Good. बोला दोस्त आपका डाउट क्या है अभी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर जैसे एक बार करेगा पहले तो 29 उसमें तो कुछ टैक्स लगता है और फिर वापस लेगा दोबारा जैसे उसका कैपिटल गेन्स का स्टोरी है. वो कैपिटल गेन्स हम अलग से बात करते हैं. उसका एक कहानी है, एग्जाम्पशन है, कुछ है, स्टोरी उधर डिस्कस करते हैं. ठीक है, डन. चलो हमारे 5 ओवर. लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी पॉइंट है ये. डिसकंटिन्यूड बिजनेस. एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, बिजनेस बंद करके जा रहा है. आप क्या बोल रहे हैं? बंद कर मेरे भाई, चले जाओ, बट टैक्स पे करके जाओ. सेक्शन 176. Clear, friends? And let me add one interesting concept which is important more for your knowledge. Listen, in first 4 cases they told in the act AO shall. AO मतलब assessing officer, nothing but income tax officer. अरे यार, income tax officer को क्या बोलेंगे हम? Assessing officer. So name only says assessing officer who is assessing our income. Everybody clear with this? Everybody, sir? They told in 4 cases AO shall, but in last case they told AO may. क्या फर्क है दोनों में? May. अच्छा, उसके बाद नवंबर. बोलो भाई. Shall means mandatory. Means in first 4 cases AO has to collect in previous year itself. But last case, discontinued business. For example, Shiva Teja started doing some business. I'm stopping in between. I can go to AO and tell, sir, किधर जाऊंगा? इधर ही क्या बंदा है वो? ये बिजनेस है तो दूसरा करूंगा. छोड़ दो ना सर, असेसमेंट में पे करेंगे, देख लेंगे ना अपन. वो बोल रहा है अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, देख लेंगे. Can you say that? Yes. But leaving India permanently or for long time and telling भाई क्या भाई, तू इधर मैं उधर, हमारा दिल इधर, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा 2-3 साल में, देख लेंगे तब आने के बाद. वो क्या बोलेगा? सॉरी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. बोले लॉन्ग डिस्टेंस बाद में देख लेते, पहले शॉर्ट डिस्टेंस का टैक्स पे करके निकल, उसके बाद वी विल रन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. चलो, आर वी क्लियर विद दिस? एवरीबॉडी सर? दैट्स इट, कॉन्सेप्ट इज ओवर. कम ऑन किड्स, व्हाट इज सेक्शन 4? Chargeability section. What does it say? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. How many exceptions are there? बोलो बेटा 5 क्या क्या है? सेक्शन नंबर छोड़ दो, सिर्फ नाम बोलो. Shipping business of non-resident persons leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP, formed for short duration or purpose. Persons likely to transfer property to avoid tax. Discontinued business. First 4 cases AO shall. Shall is mandatory. Last one AO may. May is like a discretionary power, optional. बराबर है ना बेटा? सेक्शन नंबर बोलो बेटा. 172, 174, 174A, 175, 176. दोबारा और एक बार. 172, 174, 174A, 175, 176. So please keep in mind that 173 is not there, 3 is not there, and 174B also not there. 174A is there, which is AOP, BOI, AJP. अरे आसान हो गया नहीं याद रखने?
174A is what? AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. सर क्लियर है? अब देखो यार, ए से अपन क्या क्या नहीं सीखे यार. 225A इंडिया, 87A rebate, 288A rounding off of income, 174A AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Sir, clear है? You should go crazy, man. That's how it is. Clear, pakka? Start writing. Put side heading, exception to, please put side heading, exceptions to section 4. Please put side heading, exceptions to section 4. अरे यहाँ पे एक बंदा था ना जो डाउट पूछा थोड़ी देर पहले. अरे इधर चले गए क्या? ठीक है. Exceptions to section 4. We are not writing again chargeability section and all. पता है ना अपने को ऑलरेडी? बेटा बोलो. Right, first point. And actually you can take it. Directly you can take and write there AO shall, AO may. लिखना बेटा. So done? Yes. So what are the 5 points, my dear friends? Repeat again. Shipping business of non-resident persons leaving India permanently or for long time. AOP, BOI, AJP formed for short duration or purpose. Then persons likely to transfer property to avoid tax. Discontinued business. Are we clear till here? Everybody, sir? Now one special point I will tell, we'll write as a note. Listen first. In case of a first point, which is talking about shipping business of a non-resident, what they told is, they gave a small point called presumptive income. Presumptive means assumed income. They told whatever freight you are getting, sir, they are doing transportation activity, no? What do they get? Freight only, no? They told that 7.5% of the freight, 7.5% of the freight is deemed to be your income. Because you have to understand my logic here. That is, that fellow is sitting in a ship, going out of India. Suddenly you caught him and told pay tax and then get out. उसको बोलेंगे क्या? तो 10 दिन इधर ही बैठ, हम लोग तेरा P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस करेंगे, लेजर करेंगे, जर्नल करेंगे, बोलेंगे क्या उसको? एक्ट क्या बोल रहा है? तेरा टर्नओवर कितना है? 2 करोड़. अच्छा, into 7.5%. That is deemed to be your income. Pay tax and get out. समझ गए क्या? लॉजिक समझे क्या बेटा? वापस बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से, ठीक है? In case of first point, shipping business of a non-resident, somebody who is doing shipping activity of transporting in a ship, he is going out of India. क्या बोल रहा है? भाई तू जा, टैक्स पे करके जा, बराबर है ना?
प्रैक्टिकली उसको जब जाते वक्त उसको पकड़ के बोल सकते हैं कि हम तेरा जर्नल, लेजर, ट्राई बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट सब बनाएंगे, तेरा प्रॉफिट बराबर निकालेंगे, टैक्स बराबर निकालेंगे, फिर टैक्स पे करके तू जा। प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है ना सर, बराबर है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि तेरा टर्नओवर कितना है बता, इनटू 7.5%, that is deemed to be your income. On that play tax and walk. समझ गए बेटा? क्लियर है? Just to put it in numbers, if there is a non-resident who is doing what activity, my dear friends? Shipping business activity. He is going out of India. Law is telling please go, no problem. तेरा टर्नओवर कितना है? टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स। दोस्त, टर्नओवर मतलब सेल्स ही हो गया ना? इसका टर्नओवर समझो 1 करोड़ रुपए है, तो एक्ट क्या बोल रहे हैं? इसका प्रॉफिट कितना है? 7.5%, मतलब 7.5 लाख। ये एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, बट एक्ट बोल रहे हैं यहां पे दिमाग चलाने का टाइम नहीं है, इतना प्रॉफिट अज्यूम करके टैक्स पे करके निकल। अब ये भी बोल सकते हैं अगर बाई चांस सर वो बोलेगा कि मेरा प्रॉफिट कम है, तो रुक जा इधर ही, फिर जा मत, तो रुक जा इधर ही, फिर असेसमेंट में देख लेंगे, जो करना है तब दिमाग चलाएंगे। समझ रहे क्या बात? स्पीक आउट। चल राइट द नोट। Note, in case of shipping business of non-resident, 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 comma, presumptive income is, सब प्रिजम्पटिव स्पेलिंग बराबर लिखना बेटा, PRESUMPTIVE, प्रिजम्पटिव। सब प्रिजम्पटिव मतलब क्या उसका एक्चुअली? अज्यूम, प्रेज्यूम, अज्यूम। प्रिजम्पटिव इनकम इज 7.5% of the freight. Freight spelling FREIGHT, प्लीज। फ्लाइट, फ्लाइट, ठीक है ना? दैट्स इट। क्लियर दिस पॉइंट एवरीबॉडी? दोस्तों बोलो कुछ, पक्का सबको समझ में आए बात? 100% माय डियर फ्रेंड्स, श्योर? सो व्हाट आर द सेक्शंस वी हैव डन टिल नाउ? 27 SSC, 29, 225A, 174A, AOP, BOI, AJP, formed for short duration or purpose. 177, 176 नहीं है, हाँ, 87A, 288A, 288B, 115BB, casual incomes. What income? They are taxable at 30%, मत बोल भाई, flat 30%, a flat 30%, flat, सीधा। Next, 231, 234, section 3, section 4, 172, shipping of non-resident, shipping business of non-resident, 174, persons leaving India permanently or for long time, 175, persons likely to transfer property to avoid tax, 176, discontinued business। बेटा समझ में आ रहा है? सेक्शन 14, एग्जैक्टली, पिक्चर बहुत बाकी है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में हम लोग। एंड लेट मी चैलेंज एंड टेल यू, by the time we complete 4 or 5 chapters, this board won't be sufficient to fill the numbers. And end में क्या होगा वो imagine कर लो। I'm leaving that to you. Last day क्या होगा? तूफान करेंगे। चलो, ready? Everybody, sir? Now, friends, what are the 5 heads of income? Salaries, house property, PGBP, capital gains, other sources. All 5 heads of income combined together, what do we call it? From gross total income, what do we reduce?
Hold on. Sir, there is a fundamental difference between the word deduction and the word exemption. क्या है फर्क? क्या लगता है आपको? Deductions are deducted. Exemptions are exempted. Wow! ये हुई ना बात. हाँ तोड़. Sir, listen, sir. Exemptions are those exempted incomes do not form part of total income. Exempted incomes do not form part of total income. So, getting clarity? Friends, bolo. Exempted income do not form part of what? Total income. Classic example, agricultural income is exempt under one beautiful section called section 10(1). How do you pronounce this? नहीं 10 clause 1 नहीं है because 10(1), 10(2), 10(3) ऐसा अलग अलग exemptions का points है. इसका कुछ लिंक है क्या? नहीं. जब लिंक नहीं है तो क्या बनेंगे वो? Clause. It won't be subsection. भाई लॉजिक भाई. सर क्लियर है? So exempted incomes are those which do not form part of total income. Clear? But when I talk about something called deductions, so let me tell you, deductions are of two types. Deductions are of, don't tell normal senior. Deduction में क्या रहता है? Normal senior. Deductions are of two types. Number one, which are based on payments made. Example, life insurance, medical insurance. बता देना बेटा आपको मैंने ये ट्यूशन फीस for 2 children. Etc. Like this, so many points are there. What we will learn. So clear? Yes. Other side is deductions. Some deductions are based on incomes earned. So beautiful language. Some deductions are based on what, beta? I repeat again. Some deductions are based on payments made. Some deductions are based on incomes earned. मतलब income आया, but act फिर भी कुछ deduction दे रहा है. डिडक्शन आया बट इनकम आया बट फिर भी आज कुछ डिडक्शन दे रहा है. समझ में आ रहा है बेटा? एग्जांपल दूंगा, प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे आज, टेंशन मत लो. क्लासिक पॉइंट इज दैट इफ इट इज बेस्ड ऑन इनकम्स अर्न्ड, इट इज फर्स्ट एडेड टू इनकम एंड देन डिडक्शन इज claimed. First it is added to what beta? Income, and then deduction is claimed. Classic example, interest on savings bank account. All of you guys are having bank accounts, and I'm sure everybody's bank account is savings bank account only. On that interest is coming, but you will still not pay tax because it is less than 2.5 lakhs. Interest on savings bank deduction is allowed. समझ में आ रहा है बेटा? Speak out better. Now for your knowledge, let me tell you, in case of this interest on savings bank account, there are two interesting sections known as 80TTA, 80TTB. वो सेक्शन नंबर ही है ऐसा, उसका फुल फॉर्म नहीं है. एक और सेक्शन भी है 80CCD, डोंट टेल कैफे कॉफी डे, नो, सेक्शन नंबर है CCD. समझ में आ गया ना? 80TTA, 80TTB. 80TTB, TTA talks about interest on savings bank account, where deduction is interest or 10,000, whichever is lower. समझ में आ रहा क्या बेटा? दोस्तों बोलो ना दोस्तों, सबको क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का बेटा? Sure my dear friends? Right. Other side, there is something called 80TTB. This is also interest on savings bank account or interest on FD. FD क्या होता है? And this section is applicable only and only for
senior citizen. Shiva Teja, as of now, I am claiming under 80 TTA. But one fine day, I will take under 80 TTB. If that section is there that time. समझ में आ रहा है क्या? TTB is for what citizen? TTA. Other than senior. And here interest on savings bank or interest on what, my dear friends? Fixed deposit. And the deduction is interest or 50,000, whichever is lower. Since they are senior citizens, they are giving a benefit of how much, my dear friends? 50,000. So getting clarity? Yes, my dear friend. What is section 80 TTA? Interest on savings bank account. How much is deduction? Interest or 10,000, whichever is lower. What about 80 TTB? Senior citizen only. Interest on savings bank or fixed deposit. कितना है deduction? Interest or 50,000, whichever is lower. बेटा सबको समझ में आ रहा है क्या बात? पक्का क्लियर है क्या? Sure, my dear friends. Please speak out. Everybody, sir. What is TTA? कितना डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट और 10,000, whichever is lower. बट ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है, तो पहले आप इनकम में दिखाओ, उसके बाद डिडक्शन ले लो. समझ में आ रहा है क्या? Let me complete this. 1 minute, please. Let me complete. Sir, but other side we have got based on payments made. Life insurance जो पे करे, life insurance जो पे करे उसको ऐड करके माइनस करेंगे क्या? कौन सा ऐड करके माइनस करेंगे? इनकम बेस्ड डिडक्शंस को ऐड करके माइनस करेंगे. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों बोलो ना बेटा. अब एक एग्जांपल दूंगा. आफ्टर एग्जांपल आई विल कम टू योर डाउट. या सो टेक एन एग्जांपल लाइक दिस. लेट अस से देयर इज वन पर्सन, मिस्टर शिवा तेजा. Okay, let's take a small example. Okay, my salary income is 0. Income from house property, let us say I've got 6 lakh, and PGBP, let us say I've got 40 lakh income. Okay, capital gain, my income is 0. Income from other sources, which is interest on savings bank account. इंटरेस्ट तो अदर सोर्स में जाएगा ना. इज इंटरेस्ट इनकम सैलरी इनकम? इज इट हाउस प्रॉपर्टी? इज इट पीजीबीपी? पीजीबीपी हो सकता है किसको? उसका बिजनेस ही है लोन्स देने का, बट प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है यार. जो बंदा लोन्स देते बैठे वो कुछ और भी करेगा. बोलो ना यार. हाँ, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक इज 16,000. करेक्ट नो? नाउ आई विल आस्क यू वन स्ट्रेट क्वेश्चन. व्हाट इज शिवा तेजा's gross total income? 46 lakh 16,000. That means I earned 46 lakh 16,000. But out of that, what I have done is I paid school fee for Chotu of 1 lakh. ठीक है ना? And I also paid 1 lakh. इतना एग्जाम्पल लेते, बाकी डिटेल में बाद में पढ़ते, जब आएगा तब दिमाग चलाएंगे. ठीक है ना? एक साथ ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 स्लोली स्लोली. ठीक है? पेड स्कूल फीस फॉर छोटू. कितना पे किया मैंने? 1 लाख. मतलब मैंने जो 41 लाख कमाए उसमें से पे किया ना. अरे बोलना बेटा. मेरा जीटीए कितना है? 46 लाख 16,000. मेरा जीटीए तो आ गया ना. लेस क्या करेंगे बेटा? डिडक्शन अंडर चैप्टर. अभी मैं आपको बता दूं बेटा, दैट इज very clearly one point, that whatever school fees I paid for children, tuition fees for full-time education, you should not tell your father or mother saying that whatever fees we paid to expert, that also will take deduction. This is not a full-time education. CA coaching is always a part-time education because we are all private coaching centers. But whatever BCom college fees you paid, that is full-time education. Because CA coaching is a private coaching, man. See, ICA never gave us license telling expert that this that, no names, that this that operate your coaching centers. ऐसा कुछ लाइसेंस दिया क्या? हमने कुछ लगाया क्या इधर? लाइसेंस आईसीए ने दिया हमारे को? कोई और लगाया क्या बिल्डिंग में? हाँ, सीन ही नहीं होता. लगाएंगे तो आईसीए लगा देंगे. सर समझ गए सर? कम ऑन. डिडक्शन चैप्टर 6 से देयर इज समथिंग कॉल्ड 80C. 80C. अरे 80C to 80U, C एक सेक्शन है, D एक सेक्शन है, E एक सेक्शन है, ऐसा अलग अलग सेक्शन है.
80C के अंदर ये स्कूल फीस जो मैंने मेरे बच्चे के लिए पे किया उसका डिडक्शन मिलता है. समझ में आ रहा है क्या? स्पीक आउट बेटा. एंड मैंने क्या किया और क्या किया, आई परचेस्ड वन नेकलेस फॉर वाइफ on Feb 14th. Of let us say 5 lakh. If my wife will see the example, means gone. Necklace for wife on Feb 14th for what बेटा? 5 lakhs. वो भी माइनस करो क्या 5 lakhs? बोलो बेटा क्यों? गिफ्ट. अरे भाई 5 लाख खर्चा हुआ नहीं हुआ? 1 लाख खर्चा हुआ नहीं हुआ? 1 लाख तो पर्सनल खर्चा ही है ना. अरे मेरे बच्चों को स्कूल भेजना मेरी मर्जी है ना यार. तो 1 लाख इज पर्सनल एक्सपेंडिचर, 5 लाख ऑल्सो इज पर्सनल एक्सपेंडिचर. बोथ आर पर्सनल ओनली. But law is telling we'll give deduction only for special items only. Specific points we will tell. Only that points you can take. Not everything whatever you want. In that points, one point is tuition fees for children. But you can't take any deduction for a necklace. Act is telling. मैं बोला कि तेरे को necklace देने के लिए. अरे समझ में आ रहा है क्या? आप ये नहीं बोल सकता है मैंने बोला कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नहीं. बट 80C के अंदर एक पॉइंट है, ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन फॉर विच डिडक्शन इज अलाउड. मैक्सिमम 1,50,000 ऐसा एक पॉइंट है. समझ में आ रहा है बेटा? बोलो बेटा. अब मुझे बोलो ये 1 लाख मैंने पहले ऐड करके माइनस किया क्या? 1 लाख मैंने पहले ऐड करके माइनस किया क्या? क्यों? दिस इज व्हाट बेस्ड डिडक्शन बेस्ड ऑन पेमेंट. बट जो 16,000 मुझे जो इंटरेस्ट आया ये पहले इनकम में तो दिखाया ना मैंने. पहले इनकम में दिखाया ना. अरे वो तो इनकम ही है ना यार. Once it is income, I will definitely show under income. Then I will take deduction. 80 TDA. Interest on savings bank. कितना है इंटरेस्ट मुझे एक्चुअली? बट मैं सिर्फ लूंगा 10,000. So getting clarity? And my total income will become 45 lakhs. 6 क्या? Sorry. Oh, you are right. 45 lakh 6,000. This becomes my total income on which I will calculate tax. Because ultimately tax calculation is never on GTA. Tax calculation is always on TI. बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये चीज दिमाग में जा रहा है क्या? हम कभी भी टैक्स जीटे पे नहीं निकालते भाई. डिडक्शन माइनस करो तो बचा टोटल इनकम जो है उस पर ही टैक्स निकालेंगे ना यार. Because we are never required to pay tax on gross total income. So what I'm trying to tell you very clearly is, my dear friends, slowly I will tell, listen, very clearly what I want to tell you is that these deductions are a benefit what income tax department is giving. And there are only specific points which are covered in that. Giving necklace to wife is not covered anywhere in deduction. You're getting what I'm saying? So specific points are there only deduction, like sections like 80C, 80D, 80E, 80G, 80H, 80U. ऐसा 80C से लेके 80U तक अलग अलग सेक्शन से. अब ये मत बोलो मुझे C, D, E, F, G, H कितना हो गया. अरे बीच में थोड़े 2-3 है और बीच में थोड़े नंबर्स है ही नहीं. 80I में 80IA, IB, IC, ID, IE, IAB, IAC इतने सेक्शन से. वो सब आपको इंटर में नहीं है, फाइनल में है. इंटर में आपको क्या है बोलूं? 80CCC, CCD, CCE, D, DD, G, GGA, GGB, GGC, QQB, RRB, TTA, TTB. ये आपको इंटर में है, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही पढ़ा है अभी तक में, TTA, TTB. पिक्चर अभी बाकी है, आएगा टाइम, अपना टाइम तब दिखाएंगे उसका सेक्शंस का कहानी. समझ में आया बेटा? ये क्लैरिटी आया अभी आपको? आई वॉज वेटिंग एंड स्टॉपिंग यू बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू गेट ए क्लैरिटी फर्स्ट. देन कुछ डाउट बात करेंगे तो अच्छा रहेगा. सबको समझ में आई बात? नाउ आस्क माय डियर फ्रेंड, क्लियर द डाउट? आई नो दैट्स व्हाई आई स्टॉप, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट हैपेंस इज लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू सी द एग्जांपल द क्लैरिटी विल कम. दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड. पक्का समझ में आया ना बेटा? एक मिनट फिर एक बार रिवाइज कर दो. सो डिडक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1, डिडक्शंस बेस्ड ऑन पेमेंट्स मेड, मतलब जो खर्चा हम करें उसके ऊपर डिडक्शन मिल रहा है. वो क्या है? 80C, 80D, अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग लिमिट है, अलग अलग सेक्शन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है. कौन सा सेक्शन का क्या लिमिट है हम डिडक्शंस चैप्टर में पढ़ लेते. नाउ वी आर ओनली इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट सम डिडक्शंस आर बेस्ड ऑन इनकम्स व्हाट वी अर्नड.
वैसे चीजों को क्या करेंगे हम? फर्स्ट इट विल कम अंडर पार्ट ऑफ इनकम, देन विल क्लेम डिडक्शन, एंड द क्लासिक एग्जांपल फॉर दैट इज TTA and TTB. TTB is for senior citizen, TTA is for a non-senior citizen. In case of TTA, it is only savings bank interest, and the deduction is interest or 10,000, whichever is lower. TTB is interest on savings bank or interest on fixed deposit, where deduction is interest or 50,000, whichever is lower. समझ में आया बेटा? Everybody saw? बोलो दोस्तों भी. प्रोविडेंट फंड भी 80C में ही कवर्ड है. दोस्त मैं आपको बात बोलूं क्या? 80C में हमने स्कूल फी लिखा है ना, 80C में 15-20 पॉइंट है, जो हम लास्ट बाद में पढ़ेंगे. 15-20 पॉइंट है 80C में, और ये लोग इतना होशियार लोग, टेढ़े लोग हैं, इतना 15-20 पॉइंट दिए ना, उन्होंने फिर बोला है 15-20 पॉइंट पूरा मिलके 1,50,000. शिवा तेजा के पास लाइफ इंश्योरेंस है, स्कूल फीस भी है बच्चे का, PF भी है. मेरा तीनों मिलके एक्चुअली साल का 5-6 लाख जाता है उसमें, बट डिडक्शन कितना ले रहा है पता है हमें? ओ पता चलेगा यहाँ पे आपको. लिटरली मेरा 5-6 लाख रुपए जाते हैं ये तीनों में, लाइफ इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, बच्चे का स्कूल फीस में. आई पे 6 lakhs ऑलमोस्ट. 1.5 lakh फॉर माई सन स्कूल फीस, 1.5 lakh आई पुट इन माई PF, एंड 2 lakhs विल गो फॉर लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. बट व्हाट डिडक्शन आई एम गेटिंग? 1.5 lakh. Now if I call मैडम जी, और if I tweet मोदी जी टेलिंग मैं 6 लाख पे कर रहा हूं, 1.5 लाख ही मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस 3 लाख पे किया मैंने, वो रिप्लाई करे, क्या रिप्लाई करेंगे? क्यों किया? मैंने बोला क्या तेरे को? बोल. हम लोग बोले तेरे को 1.5 लाख देंगे, ज्यादा देंगे क्या? और उल्टा ये बोलेंगे, भाई हम जो बेनिफिट दे रहे हैं ना, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो, ज्यादा पूछना मत. ये मंदिर का प्रसाद है, जितना मिलता है उतने खुश होना चाहिए. आप मंदिर में कुछ प्रसाद दिए तो नहीं बोल सकते आप, अरे आपके मंदिर में तो लड्डू बहुत अच्छा रहता है, और लड्डू 2 दे दो ना, 1-2 देंगे ना. वैसा सीन है गवर्नमेंट के पास. समझ गए क्या बेटा? बेटा क्लियर है ना? जितना मिला उतना खुश होना चाहिए यार. ऑप्शन नहीं है, टेंपल का प्रसाद है, क्या कर सकते. जब तिरुपति जाते तो 1 लड्डू में खुश नहीं होती, 3-4 लड्डू खाने का मन करता है, पर वो देता नहीं ना. वो बोलते पीछे काउंटर में जाके ले ले. बट वो काउंटर का लड्डू अलग रहता है, जो लाइन में ऐसा खड़े होके लेने का प्रसाद, उसका मजा अलग ही है. एनीवेज छोड़ो अभी लड्डू क्यों. नेक्स्ट, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी? यार बोलना बेटा. डाउट क्लैरिफाइड? नो मैडम, यू आर क्लियर? एनीवन एल्स, एनी डाउट इन दिस? सबको समझ में आया कि डिडक्शन वाला कहानी? बेटा पक्का क्लियर? पुट द हेडिंग डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन. Difference between exemption and deduction. Underline right below. You don't put 2 columns like that. Direct matter लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना? Continue. Exempted incomes are those incomes which do not form part of exempted incomes are those incomes which do not form part of what beta? Exempted incomes are those incomes which do not form part of total income. Exempted incomes are those incomes which do not form part of total income. Example, agricultural income is exempt under section, बोलो, बताया आपको मैंने, हाँ 10 क्लॉज बने ऑब्वियसली, मतलब रिलेटेड नहीं है तो क्लॉज ही होगा ना. 10(1). सर आपको एक 1 पॉइंट आई टेल यू फॉर नॉलेज, all the exemptions of income tax are given under section 10 only. In that we have got 10(1), 10(2), 10(3), 10(4), 10(5), almost 30-40 points are there.
But in your syllabus, 8-9 points are there. Students पूछ रहे बाकी कब पढ़ेंगे? Final. अरे यार, सब कुछ अभी करेंगे तो बाद में क्या करेंगे? कुछ भी अभी नहीं करेंगे तो बाद में सब कुछ एक साथ थोड़ी करेंगे. डायलॉग अच्छा है. गुड. ठीक है, समझ में आया ना बेटा? ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम विद सेक्शन 10(1). नेक्स्ट लाइन. एग्रीकल्चर इनकम पे कोई लिमिट है क्या कि इतना लिमिट? नहीं, एग्रीकल्चर इनकम अगर 50 लाख भी है फिर भी टैक्स जीरो है, प्रोवाइडेड वो बंदे के पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है. अगर कोई बंदे के पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी है, उसका थोड़ा टैक्स का अलग कहानी है, विच वी विल लर्न इन सेकंड चैप्टर. अगर एक बंदे के पास सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्स जीरो है, बिल्कुल जीरो है. अगर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम ही है तो क्या बोला मैंने अभी? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड विद सेक्शन 10(1). उसके बाद क्या लिखे? कुछ नहीं ना. नेक्स्ट लाइन. डिडक्शंस आर दोस which are reduced from GTI. Deductions are those which are reduced from GTI. Deductions are those which are reduced from GTI and are given under. Deductions are those which are reduced from GTI and are given under chapter. बोलो बेटा, चैप्टर 6A. 6 कैसा लिखेंगे आप? रोमन 6. प्लीज गलती मत करना उसका. 6A ब्रैकेट सेक्शन 80C2. सेक्शन 80C2. 80 मतलब 80C अलग है, 80D अलग है, 80D अलग है, अलग अलग सेक्शन है उसमें. समझ में आया बेटा? बोलो बेटा. टेक दिस डायग्राम इन द बुक. टेक दिस चार्ट. 80U. कोई डिसेबिलिटी का एक सेक्शन है, पढ़ते बाद में. मतलब डिडक्शंस का एक अलग चैप्टर ही है दोस्त, जब उधर जाएंगे तब पढ़ते. अभी मत, अभी नहीं. Left side you take based on payments made. First added to income and then deduction is claimed. That's what you're looking at? Yeah. So done? Wrote that point? Everybody? Yes. Take this point. You have to write this. 5 minutes. We'll complete. लिखो बेटा 80 TTA 80 TTB. There is no full form for a TTA TTB. That's a section number.
सर बैंक पोस्ट ऑफिस दोनों आ जाएंगे। हाँ, बैंक पोस्ट ऑफिस दोनों आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस में भी बैंक होता है ना, दे ऑल्सो वर्क लाइक बैंक। दोनों कैटेगरी में। हाँ, दोनों कैटेगरी में। हो गया बेटा? एक एग्जाम्पल लिख लेना लास्ट, फिर खत्म हो गया आज की कहानी। एक एग्जाम्पल लिख लेना, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा आपको। बाद में बाई चांस अगर डाउट भी आया तो खत्म हो जाएगा। I think we got a clarity now on what is deduction, how are we reducing it. कल थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते थोड़ा सा, जिसमें डिडक्शंस भी रहेगा, लॉटरी इनकम भी रहेगा, ATTTA भी रहेगा, थोड़ा सा कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करते, क्लैरिटी आएगा परफेक्ट के लिए। बोलना दोस्त, कुछ क्या डाउट है? ओनली सेविंग्स बैंक, ओनली सेविंग्स बैंक। सीनियर सिटीजन में कुछ भी हो सकता है, बट नॉर्मल अदर देन सीनियर में सिर्फ सेविंग्स बैंक। And if in this example, if the savings bank interest would have been 8,000, we would have added 8,000, deducted also 8,000. हो गया बेटा? बच्चों क्लियर है एकदम? समझ में आया ना ये चीज? चलो 2 minutes, विल क्लोज द क्लास, जस्ट 2 minutes लास्ट। कैन आई प्रोसीड? ठीक है, लिखने का कुछ नहीं है, बस मुझे बताओ बेटा फटाफट, व्हाट इज सेक्शन 27 बेटा? 29, 225A, 231 बेटा, 234, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 87A बेटा, 288A, 288B, राउंडिंग ऑफ टैक्स, 87A रिबेट समझ में आ गया ना दोस्त? चलो दोस्तों नेक्स्ट ये बताओ, 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, 174 persons leaving India permanently or for long time, 174A AOP BOI AJP formed for short duration or purpose, 175 persons likely to transfer property to avoid tax, 176 80TTA beta interest on savings bank account, 80TTB interest on savings bank and fixed deposit, TTA is for non-senior, TTB is for senior. Clear है? What is the deduction in TTA? Interest or 10,000 whichever is lower. Deduction in TTB? Interest or 50,000 whichever is lower. That's it. I think we got full clarity guys. Chalo. We'll stop here for today, and 2 small announcements before we proceed, before we leave the class. Number 1, friends, we will start solving questions also from module 1. So module 1 is there in the office. Who have already got the books, wonderful. Please get from tomorrow. Who are yet to take the books, take the books as soon as possible. Today, if you take, tomorrow we can start solving the questions. And one more small thing is that today I get to see a lot of people coming today only to the class. If you guys already got the concept, very good.
If something is missing, some doubt, there is a problem, evening I'll be in the office only till night 8:39. I'll be in the office only. Both बार आप लोग देखे होंगे नीचे मुझे. I stay back in the office because after your class I have a lot of my office work to be done. I already told you that I'm also CA into practice. In fact, that is the only reason why you are seeing me like this. I mean to say, इतना sections बोलने का, इतना conceptually, इतना confidently बोलने का reason ये है because my bread, butter, my daily activity is only tax. I've been living with the tax, LIVING, living with the tax since last 12 years. The only thing I've been doing is only tax, 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 nothing else. I traveled so many places in South India to take classes, and of course, Pune and Bombay also. Bombay also I've taken the classes. So many places I traveled. So since I'm too much into tax, that's why I'm like this. So in case you have joined today only, you guys can meet me in the class, meet me in the office after 7 p.m. Once your costing class is over, just come and meet me. Whatever doubts is there, I'll help and clarify you out. And if any of your friends want to join from tomorrow at least, they can quickly start. Whatever they missed out in this 2-3 days, I'll help them to cover up. But if somebody is attending somewhere for 6-7 days, then self-realization will come and come here after 6-7 days. It becomes difficult to cope up. You understood? No, that's the whole point. If after 6-7 days, if they come and sit in my class, by that time what will happen? First chapter is over. 30-40 सेक्शन खत्म हो गए. आप लोग zat सेक्शंस बोलेंगे, वो बंदा देखेगा ये क्या हो रहा है. लिटरल बलात्कार हो जाएगा. वो मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा सर, मजाक नहीं कर रहा हूं. आप कोई भी दोस्त से आप जाके पूछ लो, जितना सेक्शंस आप लोग बोलेंगे ना, उसमें आधा भी नहीं बोलेंगे. वो मैं गारंटी देता हूं. मैं 100% गारंटी आई गिव. जितना आप बताएंगे उसमें आधा भी नहीं बोलेंगे. और लास्ट में देख लेना आपको तो 100%. So if any of your friends want to join, I mean, who are still thinking कि इधर जाए उधर जाए, थर्ड फ्लोर में बैठे, सेकंड फ्लोर में बैठे, फर्स्ट फ्लोर में बैठे, guide them, tell them. And if somebody already prepared and made their mind sitting somebody, don't tell anything. Let them enjoy. They'll realize. ठीक है? चलो दोस्तों. And so that what happens is if you come after 6-7 days and joining somebody, they'll face a little difficulty. Initially, I can quickly support. After 6-7 days, it becomes too much difficult to cope up also. ठीक है? And who have joined today only, you guys can meet me after 7 p.m. I'll be in the office. कर लेते हैं जो मिस हो गया. चलो, thank you so much. Take care, guys. मिलते हैं कल सुबह. Thank you. And today is Vinod sir's birthday. Don't forget to wish him. मिलते हैं शाम में. हम लोग सब आएंगे. धमाका करते. Thank you so much, guys. Take care. See you. Bye bye. क्या बेटा, वर्चुअल में लाइव में फर्क समझ गए ना?